One, and we are live. Good evening, one and all. Welcome to the pre-match presentation event in Urja, conducted by VESIT Sports Council. Before starting the event, I will tell you what exactly the event is. So, on Thursday, we conducted mini games on the basis of which we provided you credits. So everyone has been assigned some credits, and the basic event is that you have to pick your starting 11 from the particular budget and the roster we had provided you a day before. For the today's event, we are having Omkar and Anand Shukla as our judges. So basically, in this event, everyone will act as coach one by one and will be given 10 minutes, in which first 5 minutes he'll have to present his starting 11 and has to give reasons behind every player being selected in the starting 11. So in the other 5 minutes, every participant except for the coach will act as media and can ask questions about the team chosen by the coach. And the coach will have to answer every question one by one. And language is not a barrier over here. You can ask your question or answer in whatever language you want, Hindi, English. So I will explain you basic flow of the event. I will call out the names one by one, and that particular person will act as coach and will be given 10 minutes. And in the first 5 minutes, he will be explaining his starting 11, and in the other 5 minutes, whoever other participants are willing to ask question can enter their names in the chat box, and I will call out their names serially and they can ask their questions. All right. So let me introduce the participants first. The first participant is from D6, Karthik Shanbag. His budget credits are 90 and opponent team is New Zealand and venue is Seddon Park. Karthik, you can present your team. Okay, thank you. One Good minute, afternoon, Karthik. guys. Just give us 2 minutes. Okay, you can start, Karthik. Good afternoon, guys. The playing 11 is Rohit Sharma, Virat Kohli, David Malan, Alex Carey, Rahul Tewatia, Karen Pollard, Moeen Ali, Sam Curran, Chris Jordan, Akshar Patel, and Jasprit Bumrah. Our opponent is New Zealand and venue is Seddon Park. Pitch report: pitch is assisting batsman. Boundaries are quite shorter and quick bowlers will get enough bounce. So we have made a proper team with equal fast bowlers and experienced batsmen and also some cluster of young batsmen too. So our openers are Virat Kohli and Rohit Sharma, the captain and the vice captain. The right and left hand conception is clearly diminished here because of the vast experiences of these two batsmen, of the two pillars of the Indian team who can bat on any pitch, and even if one is out, the other can carry forward the game alone. Next, David Malan, a perfect choice to come at number 3, owing to his short format where he is the ruler, the number 1 ranked T20 batsman. A consistent and experienced batsman who has grown on English pitches is the perfect candidate while playing against New Zealand in New Zealand. Fourth is Alex Carey, the wicketkeeper of the team, and not to forget the top scorer of DBL 2021, who is the perfect choice and one of our young contenders in this team, who will be a great factor. Fourth, Rahul Tewatia, the X factor of this team, who can bat magnificently, having a great IPL with Rajasthan. The young blood of this team and a part-time leg spinner who will be significant in getting us breakthrough in between. As I mentioned before, this is a batsman favorable pitch. Next is Karen Pollard, the big man, having an excellent recent Sri Lanka series, not forgetting the brilliant record he made with equaling Yuvraj Singh, and he just added to the squad and experience. He adds to the squad and experience all-rounder, a great leader, and also an equally good fielder.
and he can also be a great help to the youngsters and all the new all-rounders we have cherished to this squad. Next is Moeen Ali, again another English lad we have here, and again a good off spinner, a great batsman at the end. Then we have Sam Curran, young talented bowler, plays for England. Also in pressure situation, he has a lot of experience playing under someone like MSD in CSK. So he would be a great another person in the cluster of youngsters we have in this team. Chris Jordan, the Yorker King, also a destructive batsman at the end and a middle over fast bowling bowler alongside Jassi and Sam. Akshar Patel having a great he having a great test series obviously doesn't mean that he has to have a good T20, but again the he has a great technique that he has a greater record of taking wickets more on straighter delivery than spin, which means he can utilize the pitch completely, and also a dependable guy who can bat at the end. Last but not the least, Jasprit Bumrah. No justification for this man, death over specialist. For a batting favorable pitch like this is an excellent option in the end overs, and he can save a lot of runs. That's all from my side. Thank you, guys. So whoever wants to ask questions to Karthik about his team can put their names in the chat box. Rahul, you can go. Yeah. Am I audible? Hello. Yes, you you're are audible. audible. Yeah. So you said that Rahul Tewatia is your X factor, but the Rahul Tewatia has played well in the last season of IPL, and all the experience which he has is on Indian pitches. He hasn't even played a single match in New Zealand, and also the recent Syed Mushtaq Ali, which he played, he could not have a bigger impact, and he also could not lead his team to the victory. So, how are you thinking about Rahul Tewatia as your X factor on black TV pitches? See, that's what the meaning of X Factor is. Even the opponent doesn't know how we'll play on a particular day. If you remember the Rajasthan match, the way he was playing in the first half, and then he suddenly went on and smashed 4 sixes in a particular road, and you can clearly justify how he is the X factor for the team. And plus, if we have someone like Karen Pollard after him who can guide him and even help him to when he is with someone like him, Karen Pollard, he can explain him to deal in such particular situations. Even Shardul Thakur and Washington played for the first time in Australia, and you know the results what they had. They did not have any domestic record as such to boast about it, but we know the results, right? So that's what X factor. That's what I meant by X factor. He can be yes, his inexperience can be a flaw, but also a threat for the opposition equally. Okay, so next question is from Aniket. Hello. So Karthik, as you said that you have included David Malan in your squad. You know that David Malan, he usually gives a slow start. In starting 0 to 10 balls, his strike rate is around 100, and gradually picks up pace. But you know that T20 it is a fast game. It takes up pace very soon. How would he how would he create an impact by playing slow if he cannot give a good start to his team? See, the And records you also, mentioned. Oh yeah, sorry. sorry to interrupt, but also in recent T20s against India, he was not in a good touch. So how would he create an impact by giving a good start to your team? See, first of all, the playing 11 I picked is based upon the pitch. The pitch, as I mentioned before, is favorable to batsmen. And regarding the Indian series you mentioned, we know that it was favorable to spin. Obviously, not a complaint, but it was favorable to spin. And yes, he obviously gave slow starts, but we have someone like Virat Kohli and Rohit Sharma at the top, and then following him. See, if you see our Indian team itself, we have someone like Virat Kohli comes at one down in normal cases because you want your best batsman to come at the third position, and since he's ranked as number one, I found him the perfect person to take that place. And as I mentioned before, I gave him that spot based on this particular pitch. So this pitch, as I said, is favorable to batsmen. So I think David Malan may be someone different whom you are not seen till now.
That's why he's ranked number 1, right? Okay. Okay, so next question is from Priyanshu. हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, yes. तो कार्तिक, आपके प्लेइंग 11 में कितने ऑलराउंडर्स हैं? हाउ मेनी ऑलराउंडर्स यू हैव? I guess till 10, number 10, till Akshar Patel. सो बेसिकली आपने अभी तक बोले आ रहे हो कि दिस इज अ बैटिंग फेवरेबल पिच, दिस इज अ बैटिंग फेवरेबल पिच। सो टू मेंटेन अ बैलेंस वी यूजुअली डू इज हम लोग अपना बॉलिंग स्ट्रांग करते हैं। तो आपको नहीं लगता कि आपके बॉलिंग में ब्लॉक होल्स हैं? लाइक बहुत सारे मेन बॉलर्स मिसिंग है। जैसे कि जसप्रीत बुमराह इज अ प्रॉपर बॉलर हु कैन टेक विकेट्स, कम एंड टेक विकेट्स, बट मोस्ट ऑफ टाइम आपने पूरा ऑलराउंडर पे स्पेंड किया है। लाइक सैम करन जो कि अभी टच में नहीं है, यू कांट रिलाई ऑन हिम। और ऑल्सो बहुत सारे मतलब जैसे अभी आपके पास मोइन अली है, ये सब ऑफ स्पिनर है। आई डोंट थिंक सो कि न्यूजीलैंड में ऑफ स्पिनर का उतना कोई वो रोल होगा, या फिर कोई भी मोस्टली कोई भी स्पिनर का। सो डोंट यू थिंक, और एक और क्वेश्चन मतलब इसके साथ है कि डोंट यू थिंक यू कुड हैव एडेड द हो मतलब जो होम पिचेस वाले हैं ना, जैसे ट्रेंट बोल्ट या फिर टीम साउदी हु कैन गेट स्विंग, हु हैज मोर एक्सपीरियंस? या सो ऐसा है ना कि ये T20 फॉर्मेट है, तो यहाँ पे कैसे है कि हर 2 ओवर में गेम चेंज हो जाता है। तो ऐसा सीन है कि अभी यू नीड समवन लाइक, जैसे मैंने अगेन टू मेंशन कि बैटिंग फेवरेबल पिच है, तो फिर जितने डेप्थ रहेगी बैटिंग में उतना टीम को फेवरेबल रहेगा। तो ये आपने करेक्ट कहा कि क्या एक बॉलर्स की जरूरत है, बट जो बॉलर्स मैंने लिए लाइक मोइन अली, इवन अक्षर पटेल, ये लोग एक्सपीरियंस्ड है। मतलब बॉलिंग ऑलराउंडर्स में आई गेस एक को छोड़ के बाकी सब के सब एक्सपीरियंस, और उतने ही अच्छे से बॉलिंग भी कर सकते हैं प्रेशर सिचुएशन में। एंड सबको 4-4 ओवर डालने पड़ते हैं, और इतने सारे बॉलिंग ऑप्शन है कि आई गेस जो पार्शियल बॉलर्स आपने बोले, अब जैसे बैटिंग फेवरेबल पिच है तो लंबे लंबे पार्टनरशिप भी बनेंगे दोनों साइड से। तो बीच में ब्रेक थ्रू लाने के लिए वी हैव समवन लाइक राहुल तेवातिया, जिसको अगर एक ओवर हमने स्पिन की दे दी, लेग स्पिन की, तो फिर हाँ, न्यूजीलैंड में एक्सपेक्टेड नहीं है कि वो लोग स्पिन अच्छा जाएगा। बट ऐसा है कि न्यूजीलैंड के बैट्समैन को, जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आंसर किया था, उन लोगों को भी स्पिन की आदत नहीं है। जो हमने रिसेंट इंग्लैंड सीरीज में देखा था कि उन लोगों को स्पिन खेलने का आदत नहीं है। तो उनका क्या होगा आप समझ सकते हैं ना, कि समवन लाइक राहुल तेवातिया जो सडनली उसको 10 ओवर के बाद पहला ओवर दे दिया डालने को, तो उसने अगर कुछ नहीं तो एटलीस्ट रन कंट्रोल किए, तो फिर वही तो मैटर करता है, क्योंकि पिच बैटिंग फेवरेबल है और विकेट से ज्यादा मिले या फिर रन ले सेव करना ज्यादा मैटर करेगा, क्योंकि मुझे पता है मेरा बैटिंग ऑर्डर बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड दे कैन चेज एनी टारगेट एट अ गिवन डे। Okay, time is up for the Q&A session. Our next participant is from D7, Dhiren. His budget credits are 96. Opponent is Rajasthan Royals and venue is SMS Jaipur. So I'm Mansingh Stadium, Jaipur. Okay, so should I start? Yes, yes. Okay, so my opposition team is Rajasthan Royals and my venue is SMS Stadium, Jaipur, Savai Mansingh Stadium, Jaipur. My playing 11 is first, the openers, Quinton de Kock, 9 points. Virat Kohli, he's the captain. At number 3, Surya Kumar Yadav, and then followed by AB de Villiers. Number 5, Nicholas Puran, who is also the wicketkeeper for my team. Number 6, Ravindra Jadeja. Number 7, Washington Sundar. Number 8, Daniel Sams. Number 9, Sam Curran. Number 10, Jofra Archer. And number 11, Jasprit Bumrah. So starting off with the number 1, Quinton de Kock. In T20 for Mumbai and for his national team South Africa, he has been playing wonderfully. In T20, he gives the required power start. Like he doesn't waste balls. He starts off with the first ball itself. He scores runs at quick pace. Like he'll just play 10-11 balls, but he'll score 30 to 35 runs easily on any pitch. And the stadium, SMS Stadium Jaipur, has a flat pitch with a bit of green grass on it, so the ball comes easily onto the bat, and Quinton de Kock can wreak havoc on such pitches. And then number 2, Virat Kohli, he can play on any stadium, in any stadium, on any pitch. He also scores around 30 to 40 easily on in IPL. Then number 3, Surya Kumar Yadav. His form has been increasing over the last 2-3 years, and
Now he recently made debut for India, starting off with a 6. So he's in tremendous form and an ideal number 3 batsman for me, my team. Number 4, AB de Villiers. He's a great batsman and a bowler as well, and he has experience, so he can back the bowlers and also help in, suppose if the batting collapses, then he can build the partnership and he makes sure that he stays till the end, that is end of the innings, that is 20 overs. So he can easily, with this help of his experience, he can win the games for us. Fifth, Nicholas Puran, another power hitter. He can come and start hitting from the first ball itself. So even he can go for the biggies from the first ball. So he scores around 30 to 35 runs as well in around 15 to 20 balls, which is great. And then Ravindra Jadeja, he's an all-rounder, great fielder, best fielder of Indian format, Indian T20. And then in last season for Chennai as well and Indian, when India went to Australia, he batted beautifully and bowled great. He bowled very well. And this Jaipur pitch, which is flat, does not provide much turn, but Jadeja bowls at quick pace, so he can bowl great. He can bowl a great spell of 4 overs without giving much runs. Then Washington Sundar, same. He's a good batsman and a good bowler as well. He bowls flat with a great pace of around 100 kilometers per hour. So the batsman might sometimes find it very difficult to hit his balls. He usually has an economy rate of around 5 to 6 in IPL, which is great to look from T20 point of view. Then comes Daniel Sams. He recently had a great spell of, he had a great season in BBL, Big Bash League in Australia. He's also an all-rounder. He can score great with the bat and then take wickets with the ball and control if the opposition is hitting too much. Then comes Sam Curran. Again, he played very well for Chennai in the last season. He bats as well as bowls. He can give a bit of swing on flat pitch, flat greeny pitch like SMS Stadium, Jaipur. Then comes Jofra Archer. He he is from Rajasthan Royals, so he knows about this pitch very well. And I saw his stats on this stadium, and he did not go for more than 15-16 runs in many of the matches in his 4 overs, and also took 2 to 3 wickets in every match. So he's a great option. And while coming at number 10, if he comes, he can smash sixes, as we all know. He's a great batsman also. As a tail ender, he can hit sixes from ball one. Then comes Jasprit Bumrah. He's a great bowler, and such pitches will help him a lot. He can go for around 15 to 16 runs maximum on such pitches. That's it. Okay, so whoever wants to ask questions about his team can enter their name in chat box. So Manish, you can go first. You can ask your question. Yeah. So Dhiren, if your bowlers are under pressure and if they go for runs, then who are your backup options? Okay, so thank you for the question. So, see, I have main 4 bowlers: Jasprit Bumrah, Jofra Archer, Ravindra Jadeja, and Washington Sundar. 2 pacers and 2 spinners. So my backup bowlers are Daniel Samson, Sam Curran. So if any of the, suppose Washington Sundar is going for big runs, he's going for probably 10 to 11 runs an over. So I can either switch to Daniel Sams or Sam Curran. So Daniel Sams bowls, he can vary his pace a lot, so he can bluff the batsman a lot. And then Sam Curran also can vary his pace on and can be a great bowler, backup bowler on such pitch. Okay, so next question is from Karthik. हाँ, तो मेरा क्वेश्चन ये था धीरेन कि आपकी टीम में 3 विकेट कीपर्स है, राइट? डिकॉक, पुरन एंड डी विलियर्स. तो
डिविलियर्स को समझ सकते हैं कि आरसीबी में फील्डिंग वगैरह किया है, बट रिगार्डिंग डीकॉक एंड पुरान, ये लोग अपने टीम्स के लिए हमेशा विकेट कीपर रहे। तो अभी ऐसा है ना कि बीच में लाइक धोनी और जब दिनेश कार्तिक एक ही टीम में खेलते हैं तो देर यूज्ड टू बी सम फील्डिंग मिशअप, राइट? तो अभी ये जो फील्डिंग में फ्लॉ आ रहा है डीकॉक और पुरन की वजह से, आपने पुरन को कीपर बनाया राइट, लेकिन डीकॉक यस ने कभी कीपिंग छोड़ के कुछ पोजीशन लिया ही नहीं है। तो ये आप डिफेंड कैसे करोगे कि अपने टीम में T20 फॉर्मेट है, तो फिर आपको सब फील्डर्स अच्छे लगेंगे एंड पावर प्ले के टाइम वगैरह क्लोज फील्डर्स वगैरह रहते हैं बहुत, तो फिर समवन जिसने फील्डिंग बहुत कम किया है और जो नॉर्मली अपने टीम के लिए हमेशा विकेट कीपर रहे, उनको वो जो बीच में एक प्लेयर का फील्डिंग का इनएक्सपीरियंस आ रहा है उसको आप जस्टिफाई कैसे करो? Okay, so see, the wicket keepers are De Kock and Nicholas Puran, and विकेट कीपर्स भी अच्छे फील्डर्स होते हैं, ऐसे नहीं है. सो निकोलस पूरन स्लाइटली हेल्थियर है, मैं बोल सकता हूँ वेट एंड फिजिक वाइज, एंड डिकॉक हैज अ लीनियर फिजिक बॉडी. सो मुझे लगता है निकोलस पूरन विकेट कीपिंग करके क्विंटन डिकॉक को अगर मैंने लॉन्ग ऑन या शॉर्ट थर्ड मैन पे भी रखा तो फिर वो अच्छी फील्डिंग कर लेगा. ऐसा कुछ इशू नहीं आएगा उसको फील्डिंग में. So my goal will be to keep Nicholas Puran as a wicket keeper and Dickok को मैं फील्डिंग पर रखूंगा, शॉर्ट थर्ड मैन या जिधर भी उसको इजी लगेगा. Okay, next question is from Rahul. Washington Sundar, all the success that Washington Sundar has got in the IPL, that is when he bowls in the power play. But all your four seamers Daniel Sams and Sam Curran, these are basically swing bowlers. So they would want to bowl in the first 6 overs, right? So then where will you bowl Washington Sundar? Because in middle overs he goes for a lot of runs. हाँ, so regarding my bowlers, जसप्रीत बुमराह कैन bowl at any number. Like उसको मैं अगर 6-7th ओवर भी दूंगा तो फिर वो मेरे को विकेट्स लेकर देगा, या फिर विकेट्स नहीं लगा तो एटलीस्ट रन्स जाने नहीं देगा. वो 5-6 रन्स देगा मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं देगा. वो ऐसे पिच पे, वो फ्लैट पिच है और उस पे ग्रास भी है, तो एक तो उसका मेन पेस है. एंड सैम करन जैसे मैंने बोला बैकअप बॉलर है, तो उसको मैं बॉलिंग दूंगा या नहीं दूंगा. अगर सपोज कोई बॉलर ज्यादा रन्स दे रहा है तो मैं उसको एज अ बैकअप ला सकता हूँ. वो मेरा 6th बॉलर है एक्चुअली, तो ऐसा रिगार्डिंग उसके रिगार्डिंग ऐसा कुछ इशू नहीं होगा. वॉशिंगटन सुंदर को मैं एक या 2 ओवर पावर प्ले में देख सकता हूँ. अगर वो अच्छा कर रहा है तो उसको मैं 3rd ओवर भी लाऊंगा. लेकिन मेरा पावर प्ले में जॉफ्रा आर्चर और सैम करन और वॉशिंगटन सुंदर, ऐसे तीनों को मैं 2-2 ओवर दे सकता हूँ. 1-1 ओवर ऐसे ट्राई कर सकता हूँ सबको. Okay, next question is from Aniket. Hello. So Dhiren, you said that आपके पास 4 fast bowlers and 2 spinners, right? Yes. And the opponent team, Rajasthan Royals, they have big hitters like Ben Stokes and Josh Butler, who are foreign players. So foreign players, as we know, they are most likely to give wickets against spinners in India. So as your team has only 2 spinners, like you mentioned, Washington Sundar and Jadeja, how would you tackle to take their wickets? Because Josh Butler and Ben Stokes, they are really a good power hitters. Yes. So see, मेरा जो प्लेइंग 11 है वो मैंने पिच के ऊपर डिसाइड किया है. ये जो जयपुर का पिच है उस पे ज्यादा टर्न नहीं मिलेगा, बॉल स्ट्रेट ही जाएगा, स्पिन होगा ही नहीं ज्यादा. सो इसके लिए मैंने 2 ही स्पिनर रखा है और बाकी सब फास्ट बॉलर्स है. तो ये जो पिच है फ्लैट और उस पे ग्रीन थोड़ा ग्रास है मिडिल पे, तो उसकी वजह से ये जो पेसर्स है जसप्रीत बुमराह, जॉफ्रा आर्चर और इवन डैनियल सैम्स, ये बहुत अच्छी बॉलिंग कर लेंगे इस विकेट पे, एंड वो लोग ऑब्वियसली विकेट्स लेके ही देंगे मेरे को. एंड रिगार्डिंग वॉशिंगटन सुंदर एंड जाडेजा, उनको ये स्पिन तो नहीं मिलेगा लेकिन उनका पेस और जो बाउंस मिलता है, स्पेशली वॉशिंगटन सुंदर, उसकी हाइट भी बहुत है, तो वो अपनी हाइट का यूज लेके एकदम अच्छे से एकदम फ्लैट और फास्ट बॉल डाल सकता है. तो उससे मेरे को स्पिनर के थ्रू मेरे को बिग हिटर्स लाइक जॉस बटलर एंड ये
बेन स्टोक्स का विकेट मिल सकता है, अदरवाइज मेरे को जोफ्रा आर्चर और बुमराह तो इजीली उसके विकेट्स निकाल के दे देंगे। Okay. Okay, time is up for Q&A session. So our next participant is from D7C, Dheeraj Yadav. His budget is 98 and opponent is Pakistan and venue is Lahore. Okay. Should I start? Yeah. Oh. So I got 98 budget. So my team is starting with like Babar Azam opening with the Virat Kohli. Babar Azam gonna take the strike and Virat Kohli as captain. So then at the third position comes the Heavy De Villiers. Fourth position the Maxwell, and the fifth position will be the Nicholas Puran, like who is going to wicket keeping for the team. And the next is Sam Curran, then Shakib Al Hasan, and then Rashid Khan, Bhuvneshwar Kumar, and Trent Bolt with his partner like Jasprit Bumrah. So ऐसा है कि वे फर्स्ट ओपनिंग स्टार्ट होता है बाबर आजम एंड विराट कोहली से. लाइक एवरीवन नोस कि विराट कोहली जो है कोई भी पिच हो, वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड. लाइक उसका T20 का एवरेज ही 52 है. लाइक एवरी सिंगल मैच ही कैन स्कोर 52 रन. सो लाइक कैसा है 52 रन वो कर ही सकता है स्कोर. एंड कैसा है कि पाकिस्तान जो टीम की स्ट्रेटजी कैसा है, वो स्पिनर्स बहुत ही कम खिलाते हैं एंड फास्टर्स ऑलमोस्ट सब फास्टर्स ही होते हैं. एक स्पिनर या फिर एक ऑलराउंडर के हिसाब से स्पिनर्स होते हैं. तो विराट कोहली फास्टर्स को प्रॉपर एकदम लाइक कवर ड्राइव या फिर ओवर द कवर सिक्सेस वगैरह प्रॉपर लगा सकते हैं. अभी बाबर आजम का क्यों है सिलेक्शन टीम में, क्योंकि अभी बाबर आजम पाकिस्तान के लिए खेलता है, तो वो प्रॉपरली बॉलर्स को भी जानता है कि बॉलर्स क्या स्ट्रेटजी यूज करते हैं, पिच कैसा है, प्रॉपर पिच को मालूम है. एंड पिच का कंडीशन क्या है कि पिच प्रॉपर फ्लैट है एंड बाउंड्रीज भी उतने ज़्यादा बड़े नहीं है, तो प्रॉपर फ्लैट पिच होने की वजह से बॉल एकदम इजीली बैटिंग फ्रेंडली पिच है. ओके, तो स्टार्टिंग में मेरे वर्ल्ड क्लास के दो बेस्ट बैट्समैन हैं, बाबर आजम, विराट कोहली को लाइक कंपेयर नहीं कर सकते, बट लोग कंपेयर करते हैं विराट कोहली एंड बाबर आजम को, ऐसा. तो स्टार्टिंग मेरा ये दो से होता है. नेक्स्ट कमिंग अभी द एबी डिविलियर्स, एवरीवन नोज मिस्टर 360 डिग्री. तो T20 में एबी डिविलियर्स का लाइक एबी डिविलियर्स कैन फील्ड फॉर यू, प्रॉपर फील्डर, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ कहीं पे भी, सब लोगों ने देखा ही IPL में. वो फील्डिंग कर सकता है आपको लाइक प्रॉपर बैटिंग के लिए है थर्ड नंबर पे. फिर फोर्थ नंबर पे आता है, अभी कैसा है IPL में आप ज़्यादा टाइम नहीं ले सकते, तो फोर्थ नंबर पे ही आपको मैक्सवेल लाना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में जो मेरे दो ओपनर्स हैं उनका विकेट लाइक कम ही चांस है कि गिरता है, बट अगर गिर भी गया तो मैक्सवेल एक्सपीरियंस भी है. इट्स नॉट लाइक कि आके हिटिंग करेगा बस. अगर लाइक गेम को चलाना है तो वो चला भी सकता है, पावर हिटिंग करना है तो पावर हिटिंग भी कर सकता है. ओके, द नेक्स्ट कम्स द निकोलस पुरन. निकोलस पुरन एज अ विकेट कीपर वर्क करेगा और पावर हिटर भी है, सबने देखा है पावर हिटिंग निकोलस पुरन. एंड लाइक वेस्ट इंडीज के एवरी सिंगल प्लेयर कैन पावर हिटिंग बॉल. ओके, सो विकेट कीपिंग करेगा और पावर हिटिंग का सबको पता है. नेक्स्ट कम्स द नेक्स्ट अपना नेक्स्ट दो प्लेयर्स है सैम करन एंड साकिब अल हसन. लाइक कैसा है कि सैम करन बहुत ही यंग प्लेयर है, बट उसने बहुत ही बेटर परफॉर्म किया है हर एक लाइक जहाँ पे भी उसने खेला, IPL हो गया या फिर इंटरनेशनल, सब जगह पे प्रॉपर परफॉर्म किया. एंड साकिब अल हसन भले सबको उतना नहीं मालूम रहेगा, बट साकिब अल हसन एक प्रॉपर T20 बैट्स लाइक व्हाट वी से स्पिनर के फॉर्म में वर्क करता है. जैसा है कि साकिब अल हसन है ना, आपको पावर प्ले में भी प्रॉपर बॉलिंग करके दे सकता है, प्रॉपर लाइन लेंथ एवरीथिंग. साकिब अल हसन आपको पावर प्ले में भी बॉलिंग कर सकता है और डेप्थ में भी बॉलिंग करके दे सकता है. ओके, तो इसके लिए साकिब अल हसन टीम में. इन द नेक्स्ट कम्स राशिद खान. राशिद खान एवरीवन नोज द किंग ऑफ गुगली. लाइक कैसा है कि अभी हाँ ठीक है, राशिद खान का कैसा है, राशिद खान वहाँ पे पिच कैसा है कि आपको स्पिनर एक आध तो रखना पड़ेगा. तो राशिद खान कैसा है कि किंग है, T20 का किंग बोलते हैं राशिद खान को. उसका इकोनॉमी रेट देखोगे तो T20 में उसका इकोनॉमी रेट 6 पॉइंट समथिंग है, 6.2 आई एस. एंड T20 में इकोनॉमी रेट 6.2 इज फैंटास्टिक. एंड द नेक्स्ट इज भुवनेश्वर कुमार. भुवनेश्वर कुमार सबको मालूम है लाइक इंडिया के तीन जो ओपिनियर्स है, भुवी, भुवनेश्वर एंड से बुमराह. तो भुवनेश्वर आपको मिड ओवर्स डाल के देगा. एंड द नेक्स्ट टू बॉलर्स आर ट्रेंट बोल्ट एंड जसप्रीत बुमराह. तो ट्रेंट बोल्ट एंड जसप्रीत बुमराह लाइक
लेफ्ट राइट हैंड कॉम्बिनेशन हो जाता है यहाँ पे, दोनों स्विंग कर सकते हैं बॉल को, दोनों बॉल को प्रॉपरली स्विंग करते हैं। एंड दोनों अभी प्रीवियस ईयर साथ में ही खेले मुंबई के लिए, तो सबको मालूम कितने डिस्ट्रक्टिव थे दोनों एक साथ में। तो लाइक अभी कैसा है कि पिच प्रॉपर लाइक कैसा है आपको कि पिच प्रॉपर बैटिंग फ्रेंडली पिच है। तो मैंने जो बैटिंग डेप्थ डाला है, बाबर आजम, विराट कोहली, डेविड विलियर्स, ग्लेन मैक्सवेल, निकोलस पूरन, सैम करन, शाकिब अल हसन, राशिद खान एंड इवन भुवनेश्वर कुमार कैन बैट लाइक टिल द व्हाट इज 9th पोजीशन तक बैटिंग कर सकती है टीम। और बॉलिंग में भी ऐसा नहीं है कि मैंने बैटिंग डेप्थ बढ़ा दिया तो बॉलिंग कम हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। लाइक अभी स्टार्टिंग के ओवर्स या फिर डेप्थ के ओवर्स मेरे भुवनेश्वर सॉरी Dheeraj, जसप्रीत बुमराह नहीं। your time is up for presenting your team. ओके Okay, so Q&A session. Whoever wants to ask questions about his team can put his name in the chat box. Rahul, you can start with the question. हाँ, तो बाबर आजम आपके टीम में ओपन कर रहे हैं, बट पाकिस्तान के लिए बाबर आजम नंबर 3 पे खेलते हैं, और जो PSL में उनकी फ्रेंचाइजी टीम है वहाँ पे भी बाबर आजम नंबर 3 पे खेलते हैं। तो विराट कोहली के साथ ओपनिंग में बाबर आजम कैसे कोप कर पाएंगे? तो तू ऐसे बोलेगा तो कैसा है कि बाबर आजम है ना, तो ऐसे तो तू बोलेगा विराट कोहली भी नंबर 3 पे ही खेलता है, विराट कोहली भी नंबर 3 पे खेलता है, बट विराट कोहली का ग्रेट वो है पूरा, मतलब जब भी IPL में विराट कोहली ने 976 रन मारे थे तो वो ओपन नहीं कर रहा था। बाबर आजम भी T20 के लिए कुछ टाइम पहले अब पाकिस्तान के लिए ओपन कर रहा था, तो मालूम नहीं रहेगा भले, बट ओपन किया था उसने खुद के टीम के लिए, और वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन है। और वन डाउन एंड ओपनिंग में उतना कुछ लोचा नहीं होता है। और कैसा है कि प्रॉपर देख, मैंने बाबर आजम इसके लिए इंक्लूड किया है क्योंकि वो पाकिस्तान के लिए खेलता है और उसको पाकिस्तान का पूरा पिच प्रॉपर मालूम है, और उसके बॉलर्स क्या टैक्टिक्स यूज करते हैं उसको वो भी मालूम है, इसके लिए बाबर आजम टीम में है। Okay, so Chinmay, you can ask the next question. तो धीरज, आपका मिडल ऑर्डर इंक्लूड करता है डी विलियर्स, मैक्सवेल, निकोलस पुरन और सैम करन। तो अगर टॉप ऑर्डर कोलैप्स हुआ, या आप समझो कि कोहली और डी विलियर्स जल्दी आउट हो गए, पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स आपको पता होंगे, तो आपको लगता है कि आपके मिडल ऑर्डर में स्टेबिलिटी देने वाला बैट्समैन है? क्योंकि हमने देखा है ग्लेन मैक्सवेल तो बिल्कुल रिलायबल नहीं है और पुरन थोड़ा इनएक्सपीरियंस्ड है। मैक्सवेल इरिलायबल IPL में, मतलब अपने अभी जो रिसेंट इंडिया के साथ मैचेस हो रहे थे ना, इंडिया के साथ जब भी मैचेस हुए थे रिसेंट ऑस्ट्रेलिया के, जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया गई थी, तो मैक्सवेल ने देख, मैक्सवेल कैसा होता है कि गेम को चलाने के लिए एक्सपीरियंस है, स्टार्टिंग के प्लेयर्स जो होते हैं वो हिट कर सकते हैं, बट गेम को चलाने के लिए एक्सपीरियंस है। इसके लिए मैंने मैक्सवेल इसके लिए इंक्लूड किया है कि अगर स्टार्टिंग मेरा वो होता है कोलैप्स हो जाता है ना, तो मैक्सवेल के पास इतना एक्सपीरियंस है कि वो प्रॉपर गेम को चला सकता है, या तो लंबा ले आ सकता है, बट अगर स्टार्टिंग के बैट्समैन प्रॉपर खेल गए तो लास्ट में वो हिटिंग कर सकता है दोनों साथ में। और कैसा है, साकिब अल हसन, अगर मेरा ओपनिंग कोलैप्स हुआ तो साकिब अल हसन मेरा 7th नंबर पे नहीं आएगा, मान साकिब अल हसन मेरा सैम करन के ऊपर आएगा, या तो इवन आई थिंक निकोलस पुरन के भी ऊपर आ सकता है। वो मेरा चॉइस है कि क्या हो रहा है बैट, मतलब लाइक पिच पे क्या हो रहा है, कौन आउट हो रहा है पहले या फिर ऐसे कर, क्योंकि साकिब अल हसन का कैसा है, प्रॉपर पावर हिटिंग स्टार्ट फर्स्ट बॉल से नहीं कर सकता, वो थोड़ा सा टाइम लेके बट कर सकता है वो। तो अगर स्टार्टिंग का मेरा कोलैप्स हुआ तो मैक्सवेल गेम को चला सकता है, ऐसा नहीं है कि मैक्सवेल लाइक पावर हिटिंग ही करता है, ओनली एक्सपीरियंस वजह से वो गेम चला सकता है। और साकिब अल हसन को थोड़ा ऊपर भेजेगा तो सिंगल सिंगल करके थोड़ा दो दो लाइक 1 ओवर 2 ओवर करके फिर उसके बाद पावर हिटिंग स्टार्ट हो सकता है। Okay, Karthik, you can ask your next question. ब्रो, मेरा क्वेश्चन शाकिब अल हसन को लेके कि शाकिब अल हसन 2 साल के लिए बैन था, तो फिर उस ऐसे हाई इतनी अच्छी बैटिंग ऑर्डर रख के सडनली ऐसे प्लेयर को उसके ऊपर सैम करन खेलेगा या फिर उसके नीचे भी खेलेगा, तो ऐसा लग रहा है कि निकोलस पुरन के बाद कोई खेलने वाला है ही नहीं। मतलब शाकिब अल हसन ऑलरेडी 2 साल से खेला नहीं है, एंड देन सडनली अभी अभी जो जस्ट उसके मैच फिक्सिंग के बाद कुछ तो वो अभी आया है बाहर,
तो फिर हाउ डू यू जस्टिफाई हिम, क्योंकि सैम करन भी यंग एंड ये एंड यू आर क्लेमिंग दैट शकीब अल हसन एक्सपीरियंस है, बट इट्स लाइक स्टीव स्मिथ एंड डेविड वार्नर रिटर्निंग आफ्टर 2 years। तो ऐसे मतलब शकीब अल हसन को आप जस्टिफाई कैसे करोगे, क्योंकि वो 2 साल बाद आ रहा है ना। तो फिर फिफ्थ के बैट्समैन के बाद तो मतलब कोई यही नहीं, फ्रेजिलिटी नहीं है टीम में। एक अगर ऐसे बोलूंगा तो फिर मैं डिविलियर्स को भी टीम में नहीं रखूंगा। डिविलियर्स को भी कितना टाइम हो गया मतलब इंटरनेशनल खेले ना। आईपीएल इंटरनेशनल एक ही है, बट इस तरह से डिविलियर्स कितना टाइम हो गया उसको इंटरनेशनल खेले, कब का रिटायर हो चुका है। तो कैसा है कि एक एक्सपीरियंस प्लेयर होता है ना, उसको तो कितने भी टाइम बाद खिलाओ, वो एक दो मैच ही लेता है, मैच टू मैच। एक दो मैच लेने के बाद ही वो रिदम में आ ही जाता है, कितना भी उसको बैठा दे या फिर कुछ भी कर दे। अभी देख तू इसको देखे, अभी जो अपना रिसेंट मैच चल रहा है, तो शिखर धवन को कितने टाइम से बैठा के रखा है। टेस्ट में भी शायद टीम में था कि नहीं था पता नहीं, टेस्ट नहीं खेला, पूरा T20 नहीं खेला। उसके बाद ओडीआई खेला, उसने दिया, रन बना के दिया। तो कैसा होता है ना, जो बड़ा प्लेयर होता है वो हमेशा बड़ा ही होता है, उसको मैच में एक आध मैच ही लगता है, इतना ज़्यादा उसको फर्क नहीं पड़ता है। और शाकिब अल हसन का बताऊँ ना, इकोनॉमी रेट आई गेस 6 ही है, 6.2 या 6.3 है T20 में। और एकदम प्रॉपर बॉलिंग करके देता है, प्रॉपर, तो फिर डेथ में भी डाल के देगा ऐसा। Okay, next question is from Aniket. हेलो धीरज, आपने जैसे बोला कि जो लाहौर का पिच है वो बैटिंग फ्रेंडली है, एंड स्टिल आपका जो बैटिंग ऑर्डर जो देखेंगे, निकोलस पूरन के बाद ज्यादा बैट्समैन नहीं है, एंड जैसे पाकिस्तान के बॉलर्स है, बहुत पेस बॉलर्स है, एंड विराट कोहली का इतना अच्छा रिकॉर्ड भी नहीं है मोहम्मद आमिर जैसे बॉलर्स के सामने। तो सपोज आपका ऊपर का ऑर्डर विराट कोहली एंड बाबर आजम जैसे प्लेयर्स जो है कोलैप्स हो गए, तो आप कैसे टैकल करोगे? क्योंकि जो नीचे का ऑर्डर है आफ्टर निकोलस पुरन, सैम करन बहुत इनएक्सपीरियंस्ड प्लेयर है, उसने पाकिस्तान के अगेंस्ट हार्डली 2 to 3 मैचेस खेले रहेंगे फॉर हिज कंट्री ऑल्सो, एंड निकोलस पुरन ऑल्सो वेस्ट इंडीज के साथ, वेस्ट इंडीज की टीम से बहुत कम मैचेस खेले उसने इंटरनेशनली अगेंस्ट पाकिस्तान। तो हाउ डू यू रिलाई ऑन द प्लेयर, हाउ डू यू रिलाई ऑन निकोलस पुरन एंड सैम करन? ओके, सो इफ यू डोंट नो, आई वुड लाइक टू टेल यू दैट मोहम्मद आमिर ने रिटायरमेंट दे दिया है, ठीक है, अभी लाइक दिसंबर 2020 में। तो मोहम्मद आमिर के रिटायरमेंट के बाद लाइक पाकिस्तान का बॉलिंग स्टिल है, भारी है, बट मोहम्मद आमिर ने रिटायरमेंट दिया है, ठीक है। तो विराट कोहली और टेंशन नहीं है। और हाँ, नीचे क्या था एक्चुअली, थोड़ा क्वेश्चन रिपीट करेगा लास्ट में खींचा। नीचे के जो प्लेयर्स है जैसे निकोलस पुरन, सैम करन, अच्छा, सैम करन, अच्छा हाउ वो, डू यू रिलाई ऑन देम लाइक इफ यू देख, आर? मैंने, हाँ तो मैंने बोला ना बैटिंग फ्रेंडली पीछे ना, तूने मेरा सब बॉलिंग नहीं देखा एक्चुअली। बॉलिंग मेरा देख रहा तू, मगर देख वहाँ का पिच का एवरेज स्कोर कितना है मालूम है, 170 है, हाईएस्ट स्कोर 197। बट मेरे तो बॉलर्स देखेगा ना, मैंने बैटिंग फ्रेंडली पिच है, बराबर है, बैटिंग फ्रेंडली पिच पे प्रॉपर बैट्समैन होने चाहिए, बराबर थोड़ा बैटिंग डेप्थ होना चाहिए, वो है। बट मैंने मेरे बॉलर्स देखना तू, बॉलर तू तेरे को लगता है कि 150 क्रॉस नहीं होगा, 150 भी क्रॉस नहीं होगा। जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट, ध्रुवी, राशिद खान जहाँ तक किंग है। तो मेरे को, मैंने उसके हिसाब से कंसीडर किया, लाइक मैंने बॉलिंग भी प्रॉपर रखा है, बैटिंग भी उतना ही बराबर रखा है। Okay, धीरज, टाइम इज अप फॉर द Q&A सेशन. ओके, थैंक गाइस, मतलब जब प्रेजेंट कर रहा है टीम, तब एक जब स्टार्ट किया है तब नाम मत डालो, बीच में आपको क्वेश्चन आता है आप डाल सकते हो. सॉरी चिन्मय, मैंने आपको मिस कर दिया था. सो our next participant is from D8, Priyanshu Dubey. His credits are 95. Opponent is RCB, Royal Challengers Bangalore, and the venue is Bangalore. First of all, good afternoon, everybody. Today is a pre-match ceremony between the team match जो कि आरसीबी और मेरे टीम में होगा. So basically मैं अपने टीम पे जाने से पहले इंट्रोड्यूस करूंगा छोटा सा आरसीबी के बारे में. आरसीबी का जो बैटिंग ऑर्डर है, यू नो एज कि वो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन उनके अंदर जो हर एक प्लेयर के अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वो विन कर सके मैच, और उनके अंदर काफी ब्लॉक होल्स हैं टीम के अंदर. दे लाइक कि 2-3 प्लेयर के ऊपर ही रिलाई करते. तो मैंने ऐसा टीम पिक किया है which can like break those block holes and उनको expose करके we can make them lose. So मेरे opening batsmen हैं केएल राहुल एंड बेस्टो,
केएल राहुल सबको पता है इंडिया में कैसा खेला था उसने लास्ट आईपीएल, ही स्कोर्ड मैक्सिमम रन, और उसका रिकॉर्ड अगेंस्ट आरसीबी स्पेसिफिकली बहुत अच्छा है, लाइक ही हैज 150 प्लस स्ट्राइक रेट। और फिर उसके बाद अगर बेस्टो की बात करें तो यू कुड हैव वॉच द मैचेस नाउ, कितना अच्छा उस वो अभी टच में है और वो कितना अच्छा स्पिन को खेल रहा है। तो आई थिंक बेस्टो एंड राहुल वुड बी माय बेस्ट ओपनर्स अगर मैं बैंगलोर के अगेंस्ट जाऊं, क्योंकि बेस्टो का जो मेडन 100 है वो भी बैंगलोर के अगेंस्ट ही आया। सो आई थिंक दोज द ओपनर्स विच आई कैन रिलाई ऑन। और उसके बाद वन डाउन में आएगा सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव इज लाइक अ नेक्स्ट जनरेशन वन डाउन बैट्समैन, मतलब वो विराट कोहली जितना, विराट कोहली से कंपेयर नहीं कर सकते, बट ही हैज द पोटेंशियल लाइक विराट कोहली कि ही कैन कम, ही कैन प्ले द गेम ऑन अगर पहले विकेट गिर चुके हैं ओवर में, और अगर वो एंड में भी आ रहा है तो आपने देखा होगा इंग्लैंड के सीरीज में कितने अच्छे तरीके से ही हैड फिनिश द गेम्स। सो सूर्य कुमार यादव इज द बैट्समैन विच आई कैन रिलाई फॉर द थर्ड पॉइंट। फिर उसके बाद फोर्थ में निकोलस पूरन आता है। निकोलस पूरन आपको सबको पता होगा बहुत बड़ा हिटर है, लाइक लास्ट सीजन में भी he had maximum number of sixes at the क्या आसपास 30 सिक्सेस उन्होंने मारे थे। और उन्होंने T10 दुबई में भी मतलब एक बहुत अच्छा नॉक खेला था जिसके अंदर उन्होंने 10 ओवर में कुछ 12 सिक्सेस मारे थे। तो ही कैन बी माई बैट्समैन हु कैन कम एंड हिट एट द वेरी फर्स्ट बॉल, और अगर टीम का स्कोर कम है या फिर ऐसा कुछ है तो ही कैन पुट दैट थिंग टुवर्ड्स अदर। और उसके बाद फिर राहुल तेवतिया है। राहुल तेवतिया ही इज अ लेग स्पिनर। और अभी जब मैं जो ब्लॉक होल्स की बात कर रहा था तो सामने वाले टीम में विराट कोहली और एबी डिविलियर्स है विच आर लाइक weak against leg spin. So I have included Rahul Tewatia as a part-time leg spinner. He had troubled them. अगर आप लास्ट आईपीएल देखोगे तो जो स्ट्राइक रेट था एबी डिविलियर्स का, ही वाज लाइक लिटरली 120 के कम। अगर आप एबी डिविलियर्स जैसे बड़े बैट्समैन को अगर 120 के कम रख सकते तो जेन्युइनली आपके अंदर कुछ टैलेंट है। सो इस वजह से मैंने राहुल तेवतिया को पिक किया। और बैटिंग भी डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है, लाइक जैसे मॉरिस जैसे बैट्समैन बॉलर्स को ही कैन हिट, और बैंगलोर का पिच उतना कुछ है भी नहीं, मतलब वो छोटे पिच है, छोटे बाउंड्रीज हैं, सो ही कैन क्रॉस दोस बाउंड्रीज। और उसके बाद मेरा जो कैप्टन विकेट कीपर है महेंद्र सिंह धोनी, आई थिंक महेंद्र सिंह धोनी को डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं, बट स्टिल आई वुड लाइक कि महेंद्र सिंह धोनी अभी जैसे रिसोर्सेज हमारे पास कितने अवेलेबल हैं, लेकिन कैप्टन इज अ थिंग विच आई थिंक विच कैन मेक डिफरेंस। सो महेंद्र सिंह धोनी इज माई कैप्टन, जो कि डिफरेंस क्रिएट कर देगा। मतलब ही कैन गाइड कि कौन सा बॉलर कब आए, क्योंकि आप लोग को पता होगा महेंद्र सिंह धोनी कितना सक्सेसफुल कैप्टन है। और उसके बाद ही कैन मेक द प्लेयर्स जो कि ऑलरेडी रिटायर्ड हो चुके हैं, और ही कैन, मतलब जैसे आशीष नेहरा था उनके एंड स्टेजेस में भी ही हैड मेड देम सक्सेसफुल, और सैम करन जैसे यंगस्टर्स को भी ही कैन डू। तो मेरे को ये पूरे टीम को गाइड करने के लिए एक प्रॉपर कैप्टन और एक विकेट कीपर मिल गया जो कि बिहाइंड द स्टंप्स मेरे पूरे टीम को संभाले रखेगा, होल्ड करेगा। और एमएस धोनी का रिकॉर्ड अगेंस्ट बैंगलोर इज सो इनक्रेडिबल कि उनका हाईएस्ट स्कोर जो है 80, वो भी उनके अगेंस्ट ही आया है, और उनका स्ट्राइक रेट है 180 एट बैंगलोर पिच। सो बैटिंग के कंसर्न में भी आई थिंक एम एस धोनी कैन कम एंड फिनिश, और उनके ऊपर रिलाई किया जा सकता है। लाइक अगर पूरा टॉप ऑर्डर कोलैप्स हो जाता है तो ही कैन बैट विद द लोअर ऑर्डर एंड फिनिश द गेम, लाइक लास्ट टू लास्ट ईयर उन्होंने किया था जब 4-5 विकेट गिर गए थे, तो ही केम, ही स्टे देयर एंड एट द 5 ओवर्स 70-80 रन उन्होंने आराम से निकाल दिए थे। तो वहां पे आई थिंक इसलिए मैं एम एस धोनी के साथ जाऊंगा। और फिर Washington Sundar is quite favorable with the conditions of Bangalore. I think he can come. I think he can come. He can bowl 4 overs with the wet ball. और उसके बाद उनका इकोनॉमी भी 6 से कम है, और पावर प्ले में अगर वो उनको लाओ, और he can actually control the pace of the game. फिर उसके बाद राशिद खान की बात करें, एज आई सेड कि ब्लॉक होल्स हैं टीम के अंदर, तो मुझे टॉप ऑर्डर जो है ना, ताकि मैं रिस्ट्रिक्ट कर सकूं उनको स्कोर से ऊपर, क्योंकि आरसीबी या तो 200 प्लस मतलब मोस्टली बनाती है, या तो 150 के अंदर रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, और अगर टॉप ऑर्डर चलता नहीं उनका। तो मेरे प्लानिंग के अकॉर्डिंग मैंने जो राशिद खान लिया है, मैं उनके 2 मेन पिलर्स को गिराने के लिए मैंने लेग स्पिनर्स 2 अपने टीम में खिलाए हैं। और उसके बाद आप भुवनेश्वर कुमार की बात करें, ही ऑल्सो हैज अ ग्रेट रिकॉर्ड अगेंस्ट एरन फिंच। हाँ, your 5 minutes is up for presenting your team. ओके ओके ओके। So लास्ट whoever प्लेयर है, wants. कर दूं क्या एक्सप्लेन? लास्ट प्लेयर है तो सिर्फ Okay, बोलो जल्दी. हाँ,
तो टी नटराजन, फिर रबाडा है जिसका पेस बहुत अच्छा है, ही कैन मतलब लास्ट मतलब बहुत अच्छा विकेट टेकर है वो, लास्ट ईयर उन्होंने भी बहुत ज्यादा विकेट्स लिए थे अपनी टीम के लिए, तो ही कैन बी माय एक्स फैक्टर हियर, जो कि मेरे बड़े बड़े प्लेयर्स को लाइक ही कैन टेक टू द पवेलियंस, सो दैट्स फॉर माय टीम। थैंक यू। Okay. So, Chinmay, you can ask your question. सो आपके टीम में ओपनिंग करने को के राहुल और बेयरस्टो है, जो कि दोनों काइंड ऑफ स्लो स्टार्टर्स है, क्योंकि इंग्लैंड टीम में से बेयरस्टो जेसन रॉय एग्रेसर होता है, और सनराइजर्स में जब बेयरस्टो खेलता है तो डेविड वार्नर एग्रेसर रहता है। और आपने पंजाब में देखा होगा तो के राहुल एट द एंड एक्सेलरेट करते होंगे, पर स्टार्ट में स्लो स्टार्ट करते हैं। तो अगर हाई चेज आपका मैच रहेगा तो आपको ओपनिंग में वो एक्सेलरेशन कौन प्रोवाइड करेगा? और आपके जो ऑलराउंडर्स है वॉशिंगटन सुंदर और राहुल तेवाटिया, तो वो मतलब प्रूवन नहीं है अभी तक, और मैच विनिंग ऑलराउंडर्स कह सकते हैं क्या उन्हें? देखिए, पहले तो मैं बेयरस्टो पे बोलूंगा। बेयरस्टो इज नॉट अ स्लो स्टार्टर। उनको T20 में नंबर 2 पे भेजा था, उन्होंने 10 बॉल में कुछ 28 आते ही सिक्सेस लगाए थे। और बात करें अगर ओपनिंग में भी, तो भी फर्स्ट मैच अगर आप देखें ओडीआई का जो इंग्लैंड आपने भी मेंशन किया, उसके अंदर भी जब जब जेसन रॉय ने टाइम लिया था, तो तब उन्होंने एक्चुअली में एक्सेलरेट किया था। तो आई थिंक बेयरस्टो इज अ सम प्लेयर विच आई कैन रिलाई ऑन। और डेविड वार्नर का भी देखिए आप, लास्ट टाइम जब आईपीएल अच्छा नहीं जा रहा था, तो स्टार्टिंग में बेस्टो ही एक क्विक एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर देता है। और आपका सेकंड क्वेश्चन जो है कि मेरे मैच विनर प्रूवन नहीं है, अरे भाई, जो लास्ट ईयर में आईपीएल हुआ था उसके अंदर राहुल तेवतिया ने इतना अच्छा परफॉर्म किया, और कितना अच्छा प्रूफ चाहिए आपको? मतलब आई थिंक प्रूवन है। और वॉशिंगटन सुंदर इस प्रूवन नहीं बोल सकते, बट ही कैन बी प्रूव, मतलब उनका भी जैसे बैटिंग में टच था, अगर होता है तो ही कैन प्रूव। बट मेनली वो मेरे बॉलिंग ऑलराउंडर है, तो मेरे को उनके बैटिंग से उतना कंसर्न नहीं होगा। बट Rahul Tewatia is a pure match winner. I think he can come, he can hit ball like at the very first ball, or he can also defense if the team is going down. Rahul, you can ask your next question. यस, तो चिन्नस्वामी में मैच है, तो फिर सबसे मोस्ट सक्सेसफुल बॉलर अगर चिन्नस्वामी में देखे तो वो है युजवेंद्र चहल। तो Yes. आपने युजवेंद्र चहल को अपने टीम में नहीं लिया, और उससे पहले राहुल टेवाटिया जैसे पार्ट टाइम लेग स्पिनर्स को ले रहे हैं, उसका कोई कारण? देखिए, पहली बात तो युजवेंद्र चहल, क्योंकि उनका वो होम ग्राउंड है इसलिए वो सक्सेसफुल है। अगर आप राशिद खान को हैदराबाद में देखोगे तो वो भी उधर पे सक्सेसफुल है। तो ऐसा नहीं है कि चहल सक्सेसफुल है। बट यस, अगर आप अभी कंपेयर करोगे कि हु इज द वर्ल्ड बेस्ट लेग स्पिनर ऑल फॉर्मेट में ले लो आप, मतलब तो भी फिर भी आपको हर किसी की तरफ से राशिद खान का नाम आएगा। चहल को अब अगर आप देखो तो उनको तो मार रहे थे ना बेस्ट लोग, तो इसलिए मैंने उनको पिक नहीं किया। और आपका जो क्वेश्चन था कि चहल के जगह पे तेवतिया को क्यों गए, चहल बैटिंग तो नहीं प्रोवाइड कर सकता। आई थिंक तेवतिया इज अ पर्सन हु कैन बैट ऑल्सो, एंड कैन, अगर टीम मतलब सामने वाली टीम प्रेशर में है, लेग स्पिनर से ट्रबल हो रहा है, तो ही कैन बॉल ऑल्सो। सो आई थिंक दैट्स व्हाई। होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। Okay. Dheeraj, you can ask your next question. ओके, तो प्रियांशु, यस। लाइक आपने बोला था राहुल एंड बेयरस्टो ओपनिंग कर रहे हैं, थर्ड पोजीशन पे आपका निकोलस पूरन था, राइट? नहीं 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 नहीं, थर्ड पोजीशन पे सूर्य कुमार यादव था। ओके, एंड फोर्थ निकोलस, राइट? यस। ओके, सो लाइक आपको मालूम है कि चेन्नई कैसा है, चेन्नई का वो प्रॉपर नहीं है कि कभी कभी भी अच्छा, कभी कभी अच्छी बॉलिंग करते हैं, कभी कभी हट देते हैं, पता है चेन्नई, सबको। चेन्नई नहीं, सॉरी, आरसीबी। आरसीबी, हाँ आरसीबी। आपके अपोनेंट है, ठीक है। तो कैसा है, अभी चहल का होम ग्राउंड है, चहल आरसीबी के लिए खेलेगा। अगर स्टार्टिंग के लेट्स कंसीडर 2 विकेट गिर गए, ठीक है, तो आपका लाइक हेलो बैटिंग गाइड हेलो हेलो, क्या सॉरी रहेगा? आई कुडंट हियर यू। आपने वहां से कंटिन्यू करो ना कि आरसीबी मतलब अच्छा खेल भी सकती है हाँ, और नहीं। अच्छा खेल भी सकती है, नहीं भी खेल सकती ओके है, अच्छा। बॉलिंग का टीम, बॉलिंग साइड। ओके, तो स्टार्टिंग में अगर लेट्स कंसीडर चहल ने 1-2 विकेट निकाल दिए, चहल का होम ग्राउंड है और बहुत सही बॉलिंग करता है वो चेन्नई में, पता है, ठीक है। तो अगर स्टार्टिंग में 1-2 विकेट निकाल दिए, तो लाइक निकोलस पूरन, और क्या लगता है मतलब बीच में गाइड कैसे होने वाला है? धोनी थोड़ा लेट आने वाला है, वो तुमको पता है, हाँ स्टार्टिंग वो कैसे होने ठीक वाला है। बट अगर लेट आएगा, बट अगर इतना विकेट्स गिर जाते हैं, तो धोनी लाइक आ भी सकता है ना ऊपर। मतलब ही हैज एक्सपीरियंस, ही कैन प्ले द गेम ऑन सिंगल्स डबल्स, बहुत फेमस है वो सिंगल डबल्स के लिए। तो आई कैन, धोनी इज अ प्लेयर हु कैन गाइड देम। और राहुल तेवतिया को ही मतलब वो बस भेज सकता है, निकोलस पूरन को रोक सकता है, जैसे आपने बोला अगर चहल विकेट ले लेता है तो। बट ऐसा सूर्य कुमार यादव भी एक मिडल ऑर्डर बैट्समैन है जो कि स्पिन बहुत अच्छा खेलता है, इंडियन
कि इंडियन मतलब ही इज अ इंडियन प्लेयर. सो आई थिंक है मेरे मतलब मिडल ऑर्डर और लोअर मिडल ऑर्डर में वो बैलेंस है दैट कैन टैकल द लेग स्पिन ऑफ चहल, और ऐसे कोई सिचुएशन होता है इसलिए तो मैंने धोनी जैसे एक पिलर को आई हैव पुट इन माय लोअर मॉडल टू एज अ बैकबोन कि वो सपोर्ट कर सके ऐसे सब कंडीशंस में. Okay, Priyanshu, your time is up for Q&A session. Our next contestant, our next participant is from D9, Rahul Kulkarni. His credits are 102. Opponent is South Africa and venue is Newlands. Good afternoon. I'm Rahul. So my starting 11 is Rohit Sharma, Virat Kohli, who is the captain of my team, David Malan, Glenn Maxwell, Nicholas Puran, Hardik Pandya, R. Ashwin, Rashid Khan, Mitchell Stark, Jofra Archer, and Jasprit Bumrah. I've kept Rohit Sharma and Virat Kohli for the opening because you all know what happened in the recent match against England when they both opened. They scored with a partnership more than 100 plus runs. And also, when Virat Kohli has opened for his franchise, suppose RCB, he has scored more than 900 plus runs in a single season of IPL with four centuries under his belt. So that's an incredible feat which he can achieve if at all he opens for India in the international team as well. David Malan, we all know, is the num- world number one T20I batsman, and also his record in Newlands is incredible. So he grabs the number three spot. Glenn Maxwell. Glenn Maxwell is an Australian player who likes bouncy tracks. So South African pitches are very similar to Australian pitches where the ball seams and bounce a bit. So he would enjoy there hitting his shots. Then Nicholas Puran, who is also my wicket keeper. He has an experience of playing with different kinds of league all over the world where he plays this role of finisher pretty well, and his striking ability is at par with any of the greatest hitters all around the world today. Then Hardik Pandya currently is in great form, and also he has started his bowling, so he gives me a bowling option there, and also he is an incredible finish in the death overs. In my top six, there are two left-handers, so that it will just provide a different ability in my top six batting order. Then Ravi Ashwin, he's the main spinner in my attack. With the wealth of experience he brings in, he becomes the most important spinner in my attack. Then Rashid Khan. Rashid Khan was recently awarded the ICC Player of the Decade award, and also he's just 22, so he's still pretty young, though he doesn't look like it, but he's young and contributes immensely with bat, ball, and also with his fielding. Then three fire guns to make the most of the bouncy tracks on the South African soil. That is Mitchell Stark, who is a left-hander, balls at 145 clicks, incredible plays, great height, will get extra bounce and zip from the surface. Then Jofra Archer can contribute with the bat and also has an extra pace, which will make life difficult for any batsman. Then Jasprit Bumrah, we all know he's the Yorker King, and his contributions in the dead over will be crucial, and we hope he'll pick most amount of wickets for us. That's it. Okay, Priyanshu, you can ask your question. So basically आपने आपके मिडल ऑर्डर में कौन कौन है जरा एक बार बताइए क्विकली थोड़ा सा. राहुल, एक सेकंड. प्रियांशु, आप अगर पहले सुन लीजिए ध्यान से, लास्ट में जब प्रेजेंटेशन खत्म हो जाती है उसके बाद में आप नाम डालिए. आपको अगर क्वेश्चन है आप ये नहीं, मैं सिर्फ ऐसे पूछा. आई नो. और तो एक टाइम पे एक ही क्वेश्चन अलाउड है, तो आप जो भी क्वेश्चन है आपका पर्टिकुलर आप वो पूछिए डायरेक्ट. तो देखिए बेसिकली आपके जो मिडल ऑर्डर में वो स्ट्रेंथ नहीं है. अगर स्टार्टिंग के विकेट्स गिर जाते हैं, जो आपने बोला बाउंसी पिचेस जिप होता है, तो उसके अंदर अगर स्टार्टिंग में विकेट्स गिर जाते हैं, रोहित शर्मा को बाउंस उतना अच्छा नहीं लगता. मतलब ही कैन नॉट प्ले पुल शॉट्स एट वेरी बाउंसी पिचेस. सो अगर विकेट्स गिर जाते हैं स्टार्टिंग में, तो आपको क्या लगता है लोअर ऑर्डर में यू डोंट हैव एनी बैट्समैन हु कैन लाइक stay there, who can hang with the other players and who can finish it, like ऐसा कोई प्लेयर नहीं है. Yeah, okay.
So first of all, I think you must be joking that Rohit Sharma doesn't like pace. He is the best pull shot player in the entire world. So अगर उनको bounce पसंद नहीं आता तो किसको पसंद आता है I don't know. But the middle order part, David Malan. David Malan has scored 99 not out on the same pitch. That is the Newlands, and that is a pretty much batting pitch. The pitch has enough bounce, but the ball comes onto bat pretty easily. So someone like Glenn Maxwell, who has a record of batting the great innings in Australia, will help me a lot. And also, Puran is also good with fast bowling. Again, the fast bowling when the ball comes onto the bat very easily, it makes the life easier for hitters like Puran and Hardik Pandya to just clear the boundary at the will. Okay, Rahul, you can ask. Karthik, you can ask your next question. Yes. Rahul, Ravi Ashwin is your lead spin bowler, right? So it's not like you are playing in India or Pakistan, you are playing in South Africa. And someone like Ravi Ashwin, who himself has not been in the ODI, neither coming centering it to T20. He has not been in T20 for so many time, and he is your lead spin bowler. And why would you give preference to someone like him? I know he's experienced in other formats too, but it's like you can't equate success of test with T20, right? So how do you justify selection of R. Ashwin, who again repeating, who is not means in your own team and who has not been in the team himself for like I guess more than 2 years, and you are not even playing in India. So how do you justify taking a spinner who has not been for such a long time? So first of all, by lead spinner, I mean the most experienced one. When I compare him to Rashid Khan, because the kind of experience Ashwin has is immense, and then he will also help Rashid Khan to ball better with his variations and everything. And on New Zealand pitches, there is not a lot of spin. So as we all know that when Ashwin went to Australia, where the pitches were not turning enough, he produced some amazing variations in his bowling and got Steve Smith out, and also bowled economically well in Test matches. I know he has not played in T20Is for India, but again, India is playing the quicker bowlers who because so that they will not give lot of runs. But Ashwin has an uncanny ability to just toss up the ball and get something out of the pitch where there is nothing. So if the batsman tries to hit him, the ball will go straight up in the air and the batsman will get caught out. So that ability that Ashwin provides will be really helpful on South African pitches. That is what I feel. Okay, Manish, you can ask. Yeah. So Rahul, I want to continue the question from Karthik. That in the as we know that between 7 and 15, the overs, it is the moving phase of the game. So with the exception of Rashid Khan and Ashwin, sometimes Ashwin for the right-handers he goes very expensive. So who can be the backup option for you? So as New Zealand pitch prefer more fast bowlers, so my backup option will definitely be Hardik Pandya. Now that he has started bowling in his full tilt, he can also bowl his off cutters and bouncers that will help us in the middle overs. And apart from that, three fast bowlers. So out of which I can bowl Mitchell Stark and Bumrah in the initial half, get and Jofra Archer like two overs each, and then bowl 1 or 2 overs of them in the middle overs to get the breakthrough, and then again finish with those three bowlers in the death over will provide me a good combination, and 1 or 2 overs I can get out of as well. So I don't think middle overs will be an issue for us. Okay, okay. Okay, time is up for Q&A session. Our next participant is from D11, Chinmay. His credits are 93. Opponent is England and venue is Pune. तो मैच इंडिया में है, इंडियन वेन्यू है, और मेरा स्टार्टिंग लाइनअप है जॉस बटलर एंड ईशान किशन ओपनिंग, देन विराट कोहली 1 डाउन, 2 डाउन डेविड मिलन, उसके बाद सिमरन हेटमायर,
हार्दिक पांड्या, सैम करन, अक्षर पटेल, राशिद खान, Natarajan and Jasprit Bumrah. So basically, first I went for the best in all the three departments, that is batting, bowling, or bowling में जसप्रीत बुमराह है. Batting में there are many options like विराट कोहली, डेविड मलान, बटलर, और इंडियन पिचेस पे हार्दिक पांड्या इज अनडाउटली द बेस्ट ऑलराउंडर. और अक्षर पटेल का अगर आपको क्वेश्चन होगा सिलेक्शन का, तो जैसे पुणे में है वो बैटिंग फ्रेंडली पिच है, और जैसे ड्यू सेटल होता है ग्राउंड पे तो बॉल स्किड होना शुरू होता है. एंड रिसेंट सीरीज में आपने देखा ही होगा कि इंग्लैंड बैट्समैन को कितना डिफिकल्ट था अक्षर पटेल को प्ले करना जब बॉल when the ball was not spinning. So Akshar Patel can be a great threat. And Rashid Khan, Rashid Khan is undoubtedly the best T20 spinner. बैटिंग का देखा जाए तो जॉस बटलर और ईशान किशन ओपनिंग में आएंगे. दोनों दोनों बहुत अच्छे प्लेयर्स है. उसके बाद विराट कोहली, और उसके बाद डेविड मलान है. तो एज पर द सिचुएशन वी कैन ट्वीक द ऑर्डर, दैट इज चेंज द बैटिंग ऑर्डर. बाद में पिंच हिटर्स चाहिए थे, तो सिमरन हेटमायर और हार्दिक पांड्या, और उसके बाद ऑलराउंडर है सैम करन. तो पुणे पिच में हमको पता है कि वो बैटिंग फ्रेंडली पिच है, तो बॉलिंग में एक ऑप्शन ज़्यादा चाहिए था, इसलिए 6 बॉलर इंक्लूड किया है. जसप्रीत बुमराह, नटराजन, राशिद खान, हार्दिक पांड्या, सैम करन एंड अक्षर पटेल. सो अगर एक बॉलर ज़्यादा रन के लिए जा रहा है तो बॉलिंग ऑप्शन अवेलेबल रहेगा. और मिडल ऑर्डर में कोहली तो गाइड करेगा, और उसके बाजू में सब प्लेयर्स खेल सकते. तो दैट्स इट. ओके, जिनको भी क्वेश्चंस पूछने हैं प्लीज अपना नाम चैट बॉक्स में डाल दो. ओके प्रियांशु, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन. आपके मिडिल ऑर्डर में. सो बेसिकली आपने बोला मैच इंडिया में है, ठीक है, और इंडिया में बहुत ड्यू गिरता है. सो आपके पास कोई ऐसे प्रॉपर 3 फास्ट बॉलर्स नहीं है कि जो कि प्रॉपर 3, क्योंकि ऐसे जो जगह पे मतलब जहाँ पे ड्यू गिरता है ना, तो वहाँ पे मोस्टली टीम्स क्या करती है कि वो प्रॉपर 3 फास्ट बॉलर के साथ खेलती है ताकि वो ट्रबल ना आए. और बट आपके पास वो प्रॉपर 3 फास्ट बॉलर मिसिंग है. आपके पास 2 वो है मतलब पार्ट टाइम बॉलर्स हैं. और आपने बोला कि क्या नाम है उसका, अक्षर पटेल का जो टर्म था, बट क्योंकि ड्यू है तो गीले बॉल के साथ अक्षर पटेल का अगर गिरा नहीं तो ही कैन बी लाइक मोर एक्सपेंसिव. तो आपका वो जो टैक्टिक्स आई थिंक यहाँ पे फेल हो. सो आपने फास्ट बॉलर का बोल रहे थे, तो मेरी टीम में जसप्रीत बुमराह है और नटराजन, ये 2 मेन बॉलर है. उसके साथ ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या. आपने ये रिसेंट T20 सीरीज में देखा होगा, हार्दिक पांड्या ने बैट्समैन को ट्रबल मतलब स्लोअर बॉल भी वो अच्छे से यूज करते. और जसप्रीत बुमराह तो इनिंग्स के कौन से भी स्टेज पे बॉलिंग कर सकते. और जो अब ड्यू का बात कर रहे हो, तो फास्ट बॉलर्स को फास्ट बॉलर ज्यादा मतलब वो उनको ज्यादा ट्रबल नहीं करता ड्यू फैक्टर. और अक्षर पटेल का अगर बात किया तो वो उसको प्लस फैक्टर है कि ग्राउंड पे ड्यू होगा. ओके धीरज, यू कैन आस्क योर नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, सो लाइक अभी आपने बोला कि लाइक ड्यू होगा, इसकी वजह से बॉल स्किड होना स्टार्ट हो जाएगा. और आपने ये भी बोला कि इंग्लैंड प्लेयर्स को स्किडिंग बॉल उतना प्रॉपर नहीं खेल पाते वो लोग. आपने ये भी बोला, और उसके कॉन्ट्राडिक्ट में आपने 3 प्लेयर्स इंग्लैंड के लिए, जैसे जॉस बटलर, मलान एंड आपके जो सैम करन है, तो उसको कैसे जस्टिफाई करने वाले हैं? देखो, जॉस बटलर टेस्ट मैच में पहले ही मैच खेला था. मलान तो बिल्कुल टेस्ट मैच खेले नहीं है. और अक्षर पटेल ने ट्रबल किया था, तो वो
मतलब वो टेस्ट मैच में था, और तीसरा प्लेयर सैम करन, तो सैम करन भी टेस्ट मैच नहीं खेले थे। Okay. Aniket, you can ask. हेलो चिन्मय। हाँ जैसे बोल। आपने बोला कि ये जो पुणे का पिच है वो बैटिंग फ्रेंडली पिच है, एंड आपकी टीम के जो मिडल ऑर्डर बैट्समैन है उसमें अगर देखा जाए तो हार्दिक पांड्या के बाद ज्यादा कोई ऐसा बैट्समैन नहीं है जिसके ऊपर आप रिलाई कर सकते हो, क्योंकि स्टार्टिंग के जो बैट्समैन है जैसे विराट कोहली, बटलर एंड डेविड मिलर, उसके बाद तो जो मिडल ऑर्डर का बैट्समैन है सिर्फ हार्दिक पांड्या है। इनके साथ का जो टॉप ऑर्डर है वो कोलैप्स हो गया, क्योंकि जो पुणे का पिच है वो बैटिंग फ्रेंडली एंड जो फर्स्ट इनिंग्स में वो फास्ट बॉलर्स को फेवर करता है। सपोज इंग्लैंड का फर्स्ट इनिंग्स में बॉलिंग भी आ गया एंड इंग्लैंड का काफी अच्छा बॉलिंग अटैक भी है, तो हाउ वुड यू टैकल इट कि आपका टॉप ऑर्डर अगर कोलैप्स हो गया तो? टॉप ऑर्डर में ईशान किशन भी है, जिसका नाम आप भूल गए शायद। हाँ, ईशान किशन अ, को मैंने। और हार्दिक पांड्या के बाद में बैटिंग में सैम करन है। तो लास्ट सीजन उसका आईपीएल आपने देखा होगा, तो वो चेन्नई से बहुत ज्यादा अच्छा खेला है। और आपने जो कहा कि फर्स्ट इनिंग्स में बॉलर को फेवर करता है पुणे का पिच, वो वो अभी ओडीआई में है, क्योंकि वो टाइमिंग मतलब वो इवनिंग आफ्टरनून के टाइमिंग में रहता है। तो तभी मतलब ब्रीज ब्रीज के वजह से वो बैट्समैन को ट्रबल होता है जब बॉल स्विंग हो रहा हो। Okay, Rahul, you can ask your next question. तो डेविड मलान और शिमरन इटमायर दोनों अपनी नेशनल साइड्स के लिए थोड़ा ऊपर खेलते हैं। एज ऊपर भी खेलते हैं तो वो थोड़ा ज्यादा टाइम भी लेते हैं सेट होने को, और फिर जाके हिटिंग करते हैं। तो नंबर 4 और 5 को एक्चुअली ज्यादा पावर हिटिंग की जरूरत होती है, और आपने टीम में डेविड मलान और शिमरन इटमायर को लिया है जो थोड़ा टाइम लेके खेलते हैं। तो आपको नहीं लगता अगर ये ऐसी टीम रहेगी तो स्कोर जो बनेंगे वो थोड़े कम होंगे? सो अगर टॉप ऑर्डर चला, मतलब वो अगर 14 15 ओवर तक खेलता है, मतलब पहले तीन, तो बाद में हार्दिक पांड्या को मतलब ऑर्डर बदल के हार्दिक पांड्या को लाएंगे एज अ पिंच हिटर। और अगर टॉप ऑर्डर फेल होता है तो डेविड 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 मलन संभाल सकते हैं। और आपने जैसे बोला कि सिमरन हेटमायर टाइम लेते हैं, वो तो नहीं लगता। मतलब सिमरन हेटमायर ज्यादा टाइम नहीं लेते स्टार्ट करने को। और उसके बाद हार्दिक पांड्या और सैम करन है एक्सेलरेशन करने को। Okay, time is up for Q&A session. Uh, for YouTube, जो भी YouTube पे live देख रहे हैं, our live stream will be shifting to another room of pre-match presentation. Okay, so our next participant is, one second. Yeah, our next participant is from D12, Rohit Jadhav. His credits are 93. His opponent is SRH, and venue is Hyderabad. Hello, am I audible? Yes. Okay, so my opponent is Sunrisers Hyderabad and venue is Hyderabad pitch. So थोड़ा the pitch loudly बोलो, condition. आपका आवाज नहीं आ रहा है. Okay, so the अभी अभी आ रहा है? हाँ आ रहा है, आ रहा है. So the pitch condition is flat pitch है. So ज़्यादा स्विंग नहीं मिलता है, ज़्यादा स्पिन भी नहीं मिलता है, बैटिंग फ्रेंडली पिच है. स्टार्ट में थोड़ा स्विंग रहता है और धीरे धीरे पिच स्लो हो जाता है. सो स्पिनर के लिए अच्छा होता है, लेकिन धीरे धीरे स्लो हो जाता है. स्टार्टिंग में बैटिंग फ्रेंडली पिच होता है. सो मेरा मेरे ओपनर्स है जॉनी बेस्ट और ईशान किशन.
तो मैंने लेफ्ट एंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन में रखा है। और जॉनी बेयरस्टो और ईशान किशन दोनों भी एक्सप्लोसिव ओपनर्स है और स्पिन को भी अच्छा खेलते हैं। और नेक्स्ट है वन डाउन बैट्समैन श्रेयस अय्यर। सो वन डाउन बैट्समैन का पोजीशन ऐसा रहता है कि उसको गेम को एंकर करना रहता है, इनिंग्स को। लाइक अगर ओपनिंग विकेट जल्दी गिर जाते हैं तो उसको ऐसे ओपनर खेलना पड़ता है थोड़ा सा अटैक करके। वो नॉर्मली मिडल में आते हैं और उनका एम रहता है कि स्ट्राइक रोटेट करके स्कोरबोर्ड चलाना रहता है और फिनिशर्स के लिए सेट करना रहता है मोस्टली गेम। तो श्रेयस अय्यर ऐसे कंप्लीट बैट्समैन है। अगर ओपनर ज़्यादा देर तक टिक जाते हैं तो श्रेयस अय्यर अपने अटैकिंग मोड में आकर बड़े बड़े सिक्स भी लगाते हैं। और नंबर 4 पे सूर्य कुमार यादव। उनका भी बेसिकली वही रोल है कि वो स्पिन को अच्छा खेलते हैं, मिडल ऑर्डर में आके फिनिशर्स के लिए सेट करना है, स्पिन को खेलना है, स्ट्राइक रोटेट करते रहना है। अगर ओपनर जल्दी आउट हो जाते तो श्रेयस अय्यर सूर्य कुमार मिडल ऑर्डर में वॉल की तरह स्टैंड होके ऐसा एक बड़ा पार्टनरशिप करके फिनिशर्स के लिए सेट कर सकता है प्लेटफॉर्म। और नंबर 5 पे है निकोलस पूरन। निकोलस पूरन से कंप्लीट 3 डायमेंशनल प्लेयर। वो कीपिंग भी कर सकता है, फील्डिंग भी लास्ट आईपीएल में देखा होगा, फील्डिंग बहुत अच्छी करी थी उन्होंने। और बैट्समैन तो बहुत अच्छे है, मतलब टेक्निकल भी है और वो अटैकिंग में भी स्विच हो सकते हैं। सो उनका रोल मेरे टीम में ऐसा फिनिशर है। और नंबर 6 पे हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या का स्ट्राइक रेट जो है से फिनिशर वो 160 का है। और हार्दिक पांड्या का रोल मेरे टीम में है कि वो फिनिशर का रोल प्ले करेंगे और 6th बॉलर होंगे। उसके बाद नंबर 7 पे राहुल तेवतिया है। सो काफ़ी ऑलराउंडर्स थे, लेकिन ऑलराउंडर्स में और वो ऑलराउंडर्स जो मतलब जिन्होंने फिनिशिंग एबिलिटी प्रूव करके दिखा है उनका उनमें फ़र्क रहता है। सो राहुल तेवतिया ने उनका फिनिशिंग एबिलिटी प्रूव करके दिखा है, प्रेशर में खेला है। लास्ट आईपीएल 2 मैच राजस्थान रॉयल्स के लिए उन्होंने जिताई थी प्रेशर में नंबर 7 पे आके। तो सेट होने को ज़्यादा टाइम नहीं लगता फिर उनको। उनका जो इकोनॉमी था पिछले साल वो 7.08 के करीब था। तो उन्होंने बहुत टाइट गेंदबाजी की थी, मिडल ओवर्स में रन लीक नहीं किए थे ज़्यादा। और उनका स्ट्राइक रेट भी 140 का था। नेक्स्ट नंबर 8 पे राशिद खान है। तो उनके बारे में तो पता है, उनका इकोनॉमी ओवरऑल आईपीएल का 6.24 है। और हाल ही में जो अल्टीमेट क्रिकेट चैलेंज हुआ था उसमें वो विनर थे। बड़े बड़े प्लेयर जैसे कि युवराज सिंह थे उसमें, और आंड्रे रसल को फाइनल में हराया था। तो उनकी बैटिंग बहुत ही बेटर हो चुकी है और नंबर 8 पे बैटिंग करने के लायक हो चुके हैं वो। सो मेरे बैटिंग नंबर 8 तक है। और मतलब अगर भुवनेश्वर को कंसिडर करोगे तो बैटिंग नंबर 9 तक है। और मेरे 3 पेसर्स है, भुवनेश्वर कुमार, डेल स्टेन और नटराजन। सो तीनों का रोल ऐसा है कि एक का रोल है कंप्लीट स्विंग बॉलिंग करना पावर प्ले में, जो डेल स्टेन बेस्ट है उसमें। उनका इकोनॉमी आईपीएल में 6.91 है। उनका रोल रहेगा पावर प्ले में गेंदबाजी करके मतलब स्विंग स्विंग करना दोनों साइड गेंद को। और ऑपोजिशन में डेविड वार्नर है जो आउट स्विंग के अगेंस्ट मतलब वो आउट होते ज़्यादा, तो डेल स्टेन उनको अटैक करेंगे लाइक। जो और जो दूसरा पेसर है टी नटराजन, उसका रोल है कि डेथ में गेंदबाजी करना। वो उनका यॉर्कर प्रिसीजन बहुत अच्छा है। उनका रिकॉर्ड है कि सुपर ओवर में 6 के 6 बॉल यॉर्कर डाले थे। और पिछले आईपीएल में और इंटरनेशनल क्रिकेट में अभी अच्छा करा है उन्होंने परफॉर्मेंस। सो डेथ डेथ बॉलर का रोल नटराजन का है। और थर्ड पेसर जो है उनका रोल है कि पावर प्ले में भी वो गेंदबाजी कर सकते हैं और डेथ में भी वो बॉलिंग डाल सकते हैं। तो 2 ओवर भुवनेश्वर पावर प्ले में डालेंगे डेल स्टेन के साथ, और 2 ओवर नटराजन के साथ डालेंगे डेथ में, और उनको यॉर्कर भी डालना अच्छे से आता है। और मेरे कैप्टन होंगे श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर का काफ़ी एक्सपीरियंस है कैप्टनशिप में और उन्होंने प्रूव भी करा है अच्छी कैप्टनशिप करके। और मेरे जो कीपर होंगे वो बेयरस्टो है। मेरे टीम में एक्चुअली बेयरस्टो, किशन और पूरन 3 कीपर है, लेकिन मुंबई ने उसमें डीकॉक जब कीपिंग करते तो किशन ने फील्डिंग करी हुई है और निकोलस पूरन ने भी फील्डिंग करी हुई है पंजाब के लिए, इसलिए जॉनी बेयरस्टो कीपर होंगे। Okay. Priyanshu, you can ask your question. हो सकता है शायद। आपने अभी बोला कि डेल स्टेन का जो इकोनॉमी है हाँ वो 6.091 है ना।
बट 6.9 अभी जो मैंने हाँ तो 6.9 है, बट अभी जो रिसेंट में मैंने एक रिकॉर्ड देखा उसके अंदर दिखा रहा है कि 2020 में डेलस्टेन का इकोनॉमी वाज 11.97, सो हाउ कैन यू जस्टिफाई दिस? हाँ, मैंने एक ऑफिशियल जो सेकेंड एक आईपीएल सेकेंड, का और जो उनको उनको बीच मैच में ही मतलब वो भी कर दिया गया था, ड्रॉप भी कर दिया गया था। हाँ, तो So, मेरा ओपिनियन उसमें है कि विराट कोहली ने उनको अच्छे से हैंडल नहीं किया था। उनका जो रोल है मेरे टीम में वो स्विंग बॉलर था पावर प्ले में। विराट कोहली क्या कर रहे थे कि अच्छे से बॉलर नहीं लेते थे, सेम टाइप के बॉलर उन्हें ले लिए थे, उसकी वजह से डेल स्टेन को डेथ में बॉलिंग देनी पड़ी थी उनको, इसलिए वैसा हुआ था। सो जो जिसका जो रोल है उसको वैसे उधर ही बॉलिंग देंगे। और जो मैंने जो स्टैट्स बोला वो आईपीएल के ऑफिशियल साइट से बोला था, और वो आईपीएल का था, खाली आईपीएल का स्टैट्स। IPL T20.com ऑफिशियल साइट है, वहाँ पे स्टैट्स बोला था। Okay, Keshav, you're next. Am I audible? Hello. Yes, you're audible. अनिकेत, मतलब तुम्हारे एंड पे या किसी और के एंड पे नेट इशू भी हो सकता है, तो जो इधर मैसेज रिसीव हो रहा है जिस ऑर्डर में, मैं उसी मतलब इधर जिस ऑर्डर में आ रहा है उसी ऑर्डर में नाम ले रहा हूँ। Okay, can I start? पूछ सकते हो आप क्वेश्चन। Yeah. As you said, at number 3 you are coming with Shreyash Iyer. At number 4 you are coming with Surya Kumar Yadav. Yes. The current form, Surya Kumar Yadav is far better, मतलब quite better than Shreyash Iyer, because Shreyash Iyer is the one who can adopt any position, and he has done that. He has played for number 3, number 4, and number 6 as well, and he is performing tremendously, right? So I feel you should give a third position to Surya Kumar Yadav, and accordingly you can modify your Shreyas Iyer at some other place, and you are also playing De Villiers at number 6, number नहीं 5, नहीं, number पूरन 5, निकोलस पूरन number निकोलस 5, पूरन right? De Villiers at निकोलस पूरन एट 5। where is De Villiers at 6? डिविलियर्स नहीं है डिविलियर्स। Okay, sorry, my fault. And you are opening, you are you're going with the Dale Steyn instead of Rishabh, you Dale. can ask one question only. Yeah. Sorry. Okay. So Karthik, you're next. Yes. My question is, someone like Rahul Tewatia, you are sending at number 7. So if I may remind you, last IPL में जब वो, सबको याद है कि उसने 5-6 मारे थे, लेकिन सब लोग ये भूल गए कि जब उसने पहले 25 बॉल खेले थे उसने कुछ 20 रन बनाए थे, ऐसा कुछ तो था। तो फिर वो अच्छा बैट्समैन है, उस पर कोई डाउट नहीं है, बट आप ऐसे बैट्समैन को मतलब इतना लेट भेजोगे तो फिर मतलब आई वांट टू जस्ट सजेस्ट इज कि अगर आप उससे 7 की जगह ऊपर भेजोगे, क्योंकि वो एक ऐसा बैट्समैन नहीं जो आपके पहले बॉल से मारेगा, अनलाइक हार्दिक पांड्या। भले वो 20 बॉल खेले, लेकिन आपको पता है कि 20 बॉल खेलने के बाद उसने कैसे लास्ट टाइम 5-6 मारे थे। तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन था कि आप उसको हार्दिक पांड्या के नीचे क्यों भेज रहे हो, समवन लाइक राहुल तेवातिया, जिसको आपको पता है कि आईपीएल में उसने 20 बॉल खेले थे और फिर जाके 5-6 मारते, उसको टाइम लगता है सेटल में। हार्दिक पांड्या पहले बॉल से ही मारेगा क्योंकि उसको इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भी है। सो हाउ यू जस्टिफाई? सबसे पहले तो वो उनका डेब्यू मैच था, और फर्स्ट मैच में वो पैनिक हो गए थे, वो बाद में बेटर हो चुके थे तेवतिया। और तेवतिया ने वो दिखा बाद में, और एक मैच उन्होंने फिनिश किया था रियान पराग के साथ, जहाँ पे वो लेट आए और ज़्यादा सेट होने को टाइम नहीं लिया, मतलब राशिद खान को रिवर्स वगैरह मार के मैच जीता था। और वैसे जो हार्दिक पांड्या वो भी ज़्यादा टाइम नहीं लेते सेट होने को, तो राहुल तेवतिया को 6 पे भेज सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। वो ऑन फील्ड मतलब मैच के कंडीशंस के हिसाब से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, अगर तेवतिया 6 पे भेज सकते हैं, हार्दिक पांड्या को भी 7 पे भेज सकते हैं। और निकोलस पूरन लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन था, इसलिए मैंने फर्स्ट प्लेइंग 11 में हार्दिक पांड्या को 6 पे रखा था, वो क्योंकि दोनों लेफ्ट हैंडेड एक साथ आ जाएंगे, इसलिए इससे ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होगा। राहुल तेवतिया भी 6 पे खेल सकते हैं, हार्दिक पांड्या 7 पे भी खेल सकते हैं। राहुल, you are next. सो बेयरस्टो को तो एसआरएच भी नहीं खिलाया था लास्ट ईयर, बट जो एसआरएच के कैप्टन है डेविड वार्नर,
वो every year he scores more than 600 runs and he's the most consistent international player of the IPL. तो उनको इस टीम में जगह क्यों नहीं बन पाई? तो वो तो मतलब जैसे क्रेडिट्स थे उस हिसाब से ऑप्टिमल टीम लेना था. अगर ऐसे सब में 10 क्रेडिट्स के ले लेता प्लेयर तो अनबैलेंस हो जाता था टीम. एक ही साइड में सब अच्छे प्लेयर्स हो जाते थे. और जॉनी बेस्ट को आउट ऑफ फॉर्म थे इसलिए बिटा ऐसा नहीं था ऐसा रेच में. उनको केन विलियमसन को खिलाना था और नीचे ऑफकोर्स ऑलराउंडर उनका कोई था नहीं इंडियन ऑलराउंडर, तो होल्डर या मोहम्मद नामी को खिलाते थे वो. तो क्योंकि वृद्धिमान शाह नीचे बुरा परफॉर्म कर रहे थे, वृद्धिमान शाह को ओपनर भेजा और इसके लिए केन विलियमसन को वन डाउन लिया बेयरस्टो की जगह. ऐसा किया था. तो आउट ऑफ फॉर्म होने के कारण बेयरस्टो को बिठाया था ऐसा कुछ नहीं था. और करंटली बेयरस्टो बहुत अच्छे फॉर्म में और स्पिन को भी अच्छा खेलते हैं. और हमारा जो मतलब एटीट्यूड रहने वाला है वो एक्सप्लोसिव बैटिंग करने वाला है. बेयरस्टो और किशन को ओपनिंग करा के. Okay, time is up for Q&A session. Our next participant is from D13, Manish Patil. His credits are 93. His opponent is Australia and venue is Perth. Yeah, should I start? Yes. So good evening all. So my opponent is Australia, and we are playing at the Perth ground. Starting with the openers, I'm getting Rohit Sharma and Butler. Rohit Sharma would be the captain of my team, and also he has scored 171 not out versus Australia in the Perth in the year 2016. Also, we know that he has scored 400s in T20I International. So next is Butler. In Australia, we need natural pullers. So getting two openers having the same kind of form, same kind of tendency to hit the short balls out of the park is more essential. One down, David Malan. David Malan is the number one T20I batsman at present with averaging 50, and also he represents Hobart Hurricane for the in the BPL, and in that also he has the average of 40. So next is Surya Kumar Yadav. Inclusion of Surya Kumar Yadav is that I was not able to include Virat Kohli since the credits. So Surya Kumar Yadav gives me this 360-degree play in order to when since the dimensions of the ground are very large, he can play the unorthodox shots. Also, in the Syed Mustaq Ali Trophy and also in the T20I against England, he used the lap shots pretty well. Next, Shakib Al Hasan. To my knowledge, he is the number 2 in the ranking ICC ranking all-rounder list, and he can give me in the first half as well as in the moving phase, that is 7 to 15 overs. So he can pretty well used for batsmen like Aaron Finch, who struggles in start. They if the batsman who if I am able to dismiss him in the start only, then it is very profitable to my team also. Second, Nicholas Puran. Nicholas Puran is my hard-hitting batsman who can play his shots from number one from his initial stage only. Next is my joker, who is Cameron Green. He since the ground which can help him because he it's the Perth is the home ground for him. Also, he plays Perth Scorchers for the same. Next is Rashid Khan. No doubt, no brainer for me to pick an leg spinner who can bowl and turn as well in the mid range of 90 km per hour. Also, he can bowl a little bit in the death also, like the 16th and 17th over. Next is the Chris Jordan. He is the for England. He is the best
death bowler specialist, as they say. Uh, he can give me the last overs as well as in the moving phase, that is 7 to 15 overs. Next is the Trent Bolt. Uh, Trent Bolt is my swinging bowler who can bowl in the initial overs in the power play, and he has the record of dismissing David Warner for 4 times in this year. Next is Rabada. The reason I chose Rabada is that over Jasprit Bumrah is that the consistency. He bowls Yorker at a consistent level. Also, he has the most number of wickets in the IPL 2020 edition. That's it. Thank you. Okay, Chinmay, you can ask your first question. Manish, I have a question on Cameron Green's inclusion in the squad. I know he plays for Scorchers, but seeing that his batting average is 15 and bowling economy is 10.5, so could he have gone for a better all-rounder like I guess Sam Curran, or if you didn't want an extra bowler, would you have selected an extra batsman instead of Cameron Green? I want some young blood to flourish, and also I want someone who is of around 6.4 feet, and he can deliver the shots to a longest distance. As we know that Perth is a big ground, so that's the reason I chose Cameron Green over Sam Curran. Okay, Priyanshu, you can ask. So basically, my question is also over Cameron Green. So you picked the Cameron Green. So it will be his T20I debut, na, this match. Yeah, yes. सो वो मतलब आपने क्या सोच के मतलब डेब्यू कराया सच एन इम्पोर्टेंट गेम समझ लो अगर वर्ल्ड कप का समझ लो फॉर एग्जांपल इफ अ वर्ल्ड कप फाइनल है ऐसा कुछ है तो यू कांट लाइक टेक चांसेस ना यू कुड हैव गॉन विद सम अदर प्लेयर्स हु कुड हैव सम रिकॉर्ड्स बट इनका T20 आई में कुछ वो नहीं है लाइक यू नो कि T20 आई और जो ये बिग बैश लीग देयर इज अ वास्ट डिफरेंस द प्रेशर एंड द नर्व्स वगैरह. So you can't play a debutant on such an important game. Do you? मुझे ऐसा सर गुड क्वेश्चन, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम यंग ब्लड को जब चांस देंगे तभी वो तो प्रेशर एब्जॉर्ब कर पाएंगे, तभी वो सीखेंगे उससे. और ऐसा नहीं है कि हमें कैमरन ग्रीन पे ही सब दबाव आएगा. वो हमारे पास निकोलस पूरन है, शकीब अल हसन है, बाद में सूर्य कुमार यादव है. अगर इफ देर आर फ्लरी ऑफ विकेट्स इन द स्टार्ट, they can manage, these three batsmen can manage the pressure, they can soak the pressure, and they can give the result. Cameron Green, if at all there is lots of run considered by our bowlers, then he can bowl a little bit, which can since he knows the ground, he can bowl a little bit, and with the slowers, we have seen in the test match also that he can bowl his slower ones very nicely. So I feel that he's the right choice, and also I told initially that he's my joker. Okay, Rahul, you are next. Rahul, you can ask. Yes. So, could there have been a case where you can consider Alex Hales as your opener, because Rohit Sharma hasn't played BBL and Josh Butler also doesn't play BBL a lot, and Alex Hale, who has been a consistent performer opening the batting in BBL, has a good command over all the Australian pitches. Could he have been your opening choice? I initially told you that Rohit Sharma has scored on the very ground Perth 171 not out in ODS. Yes, but he has also scored 400s in T20I international. So if you see, he knows the pattern of scoring, or rather I would be saying converting those 50s into 100s. That's why I chose Rohit Sharma. Next, Butler, because of the unorthodox cricket he plays. I don't remember that Alex Hales
plays that unorthodox shots, that lap shots. That's why I chose Butler. Okay, Aniket, you are next. You can ask your question. Hello, Manish. Yeah. As we know that Perth, it is a bouncy pitch. So we know that Australia has a very fast pace attack like Kane Richardson and also Mitchell Stark. How would your how would you said that you have your middle order batsmen like Shakib Al Hasan and Nicholas Puran. In case it happens that Rohit Sharma, as you said, he's a very good player of bounce ball and all. Also Butler. If both of the players fail in any circumstances, how would the middle order handle the situation? आपने बोला यहाँ पे कि शकीब अल हसन और सूर्य कुमार यादव मेरे निकोलस पुरन मेरे मिडल ऑर्डर बैट्समैन, बट यू मिस सूर्य कुमार यादव. सो अगर as rightly mentioned that if there is a situation that Rohit and Butler gets out, the anchor inning can be played by David Malan, as well as if David Malan gets out, Surya Kumar Yadav is there, and Shakib Al Hasan is not a like hitter who can score big runs from initially. So what can Surya Kumar Yadav as well as Malan or Surya Kumar Yadav or Shakib Al Hasan gives the left hand and right hand combination. As I said mentioned earlier that 7 to 15 overs are the moving phase of the game. It will decide what will be my outcome for the death overs. So if these players, number one T20I batsman, Surya Kumar Yadav as very good unorthodox as well as orthodox player, can anchor those innings. Okay, time is up for Q&A session. Our next participant is from D14, Aniket Ingle. His credits are 93. His opponent is India and venue is Himachal. Hello. Aniket, you can go on. Yes. Good evening to all. As we know that our opponent is India and we are going to play in Himachal Pradesh. So Himachal Pradesh, we know that the pitch doesn't favor both bowlers or batsmen. It is not very predictable to play at Himachal Pradesh. So according to the situations, the team which I have selected is I have my openers as KL Rahul and Rohit Sharma. KL Rahul, he has a very good experience at playing in Himachal Pradesh because he has captained Kings 11 Punjab. Kings 11 Punjab, they had their home stadium at Himachal Pradesh, but recently since they are shifted to Mohali, also Mohali and Himachal Pradesh stadium, they both have similar conditions. And for choosing KL Rahul, we know that he has second rank in ICC T20I ranking. Then Rohit Sharma, he has a very good T20I ranking, and considering the thing that he has scored his 100 against, I guess he has scored his 100 against uh, South Africa at that stadium. So both Rohit Sharma and KL Rahul would give a good start to me. The third player which I have is AB de Villiers. AB de Villiers, as we all know that he is called Mr. 360 degree. Also, he really has a good stats at playing in India. Also, he has a very good IPL experience and he has scored many runs at that stadium also against the India match which he had in 2016, around 2016-15. He was one of the key player for South Africa to play against India. The fourth player which I have is Maxwell. We all know that Maxwell, he has a very good record for playing against Indians. We know that in recent T20 also, he has single-handedly made Australia team win against India. My fifth player, I have Nicholas Puran and then I have Simran Hitmayer. They both are the West Indies players, and we as all know that Nicholas Puran, he also is an Kings 11 Punjab batsman. So even he has an experience of playing in those conditions.
Along with him, Simran Hetmar can also give an good. Simran Hetmar can also provide good attack at the end in the slog overs. Simran Hetmar, he also has strike rate around 140, and also Nicholas Puran has a very good strike rate around 150 in slog overs. Then I have Ravichandran Ashwin. Ravichandran Ashwin is a very handy bowler when it comes to Indian cricket and playing in Indian conditions like Himachal Pradesh. Himachal Pradesh, he has also captained Kings 11 Punjab. So he has a very good experience to play over there. Then I have Mohammad Amir. Mohammad Amir, he has a good stats against Indian team. He has bowled Rohit Sharma and many players like Hardik Pandya and Virat Kohli. So he can be very handy in slog overs. Then I have Sam Curran. He's a young all-rounder. He has a batting strike rate of 170, so he could give a good. He would be a very good option as an all-rounder for my team. Then I have Tim Saudi. Tim Saudi, I have chosen Tim Saudi because Tim Saudi also has very good stats against India, especially Virat Kohli. He has bowled Virat Kohli many a times. He has dismissed other batsmen like Shikhar Dhawan also many a times. He has best bowling figures against India, 3 for 17. So I think Tim Saudi would be a really good option for me, for our team. And the last player which I have is Bhuvneshwar Kumar. As we all know that Himachal Pradesh Stadium, it offers a very good swing around there. So Bhuvneshwar Kumar is a very experienced player and he would provide a very good swing at that stadium. And he would be really dangerous when it comes to the slog overs. So this was my playing 11 for playing against India. Okay. First question comes from Priyanshu. So as you said that one down you are gonna ABD Villiers, na? Yes. And two down Glenn Maxwell. So Glenn Maxwell का record particularly इंडिया में काफी अच्छा नहीं है, I think you know. और the only successful IPL he had was at the Dubai in the 2016-17. तो आपने और आपके मिडल ऑर्डर में भी कोई ऐसा रिलायबल बैट्समैन नहीं है कि वन डाउन में आके who can take the game on. दे बोथ आर लाइक कम, मतलब एबीडी विलियर्स से भी वो नहीं होता देखने गए तो मिडल ओवर्स में हैंडल, और मैक्सवेल भी इंडिया में उतना अच्छे से खेल नहीं पाता. सो हाउ डू यू जस्टिफाई दिस? आपने जैसे बोला कि मैक्सवेल का अच्छा स्टार्ट्स नहीं है. The thing which you said was right for IPL, but when it comes to T20I matches for his country, if you go and check the stats, Maxwell has very good stats against India. वो बहुत अच्छे से convert किया उसने most of the games, and he also has single-handedly won Australian team. So against India, if we consider, Maxwell can give a very good support for my team. Also, you said about ABD Villiers. ABD Villiers, as you said that at third number, he can give a very supportive role if one of my openers fail, like KL Rahul and Rohit Sharma, because ABD Villiers, since he has very good experience in playing IPLs, and also he has scored many runs against India in T20s and also on that stadium. He has scored around 55 runs which against India in 2015 or 16, and which made South African team win against India. So I guess AB de Villiers was a good option for me to play at number 3. I hope your question was answered. Okay, next question is from Karthik. So my question is extending the same question from last one. आपने जो कहा मैं थोड़ा एग्री करता हूँ कि ग्लेन मैक्सवेल के स्टैट्स इंडिया के अगेंस्ट अच्छे हैं इन हिज इंटरनेशनल टीम, बट रेयरली वो मतलब हिमाचल प्रदेश के जो अभी आपने का जो पिच है उसमें कभी भी हुआ है, क्योंकि आई एम टेलिंग दिस पर्टिकुलरली बिकॉज आपने ऐसे स्टार्ट में बोला था आपके इंट्रोडक्शन में कि केएल राहुल जब मतलब पंजाब की टीम थी उनके लिए एक टाइम होम ग्राउंड था हिमाचल का, तो फिर ग्लेन मैक्सवेल तो अभी आपको बताने की जरूरत नहीं कि इतने टाइम पंजाब में रह चुका है और उस पर इतना खर्चा किया है, तो आउटपुट तो लाइक लिटरली नथिंग है. तो फिर समवन लाइक हिम जिसको मतलब ऐसे पिच पे इतना चांस दे के भी जो परफॉर्म नहीं, आई नो आईपीएल में तो इवन इंडियन टीम से बेटर है क्योंकि फॉरेन प्लेयर्स भी आते हैं, तो फिर
आप मतलब आई वुड ही अगर उसका स्टैट्स अच्छा है इंडिया अगेंस्ट, तो आई वुड पुट हिम इन माय बैकअप, आई मीन पहले 15 में डाल देता, बट आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई ही सिलेक्टेड इन प्लेइंग 11, बिकॉज वो उसका पंजाब का हिस्ट्री देखा तो आई डोंट थिंक ही डिजर्व्स टू बी इन प्लेइंग 11. सो हाउ डू यू जस्टिफाई? The question you asked, it was regarding Glenn Maxwell, right? So Glenn Maxwell, as you said that पंजाब में रह के भी वो अच्छा नहीं खेल पाया फॉर पंजाब. It was the time during 2018 around, and वो टाइम पे the stadium was shifted to Mohali. So हिमाचल प्रदेश का इतना हिमाचल प्रदेश का जो स्टेडियम है इतना कांटेक्ट नहीं आता. एंड जो आपने बोला, इट वाज ट्रू फॉर आईपीएल सिचुएशंस. व्हेन इट कम्स टू T20 मैचेस इंटरनेशनली, मैक्सवेल, as we all know that he has a very good experience. In case if उसका बैटिंग थोड़ा वीक हो भी गया तो उसका बॉलिंग स्टार्ट्स भी एज एन ऑफ स्पिनर काफी अच्छा है वहां पे, क्योंकि आप चेक करोगे तो वो स्टेडियम पे he has a very good bowling stats of around getting 2 wickets for economy of around 5 to 6. And even if he doesn't provide me batting, he can provide me bowling. उसके जगह पे I have my pinch hitters like Shimron Hitmar and also Nicholas Puran. Both Windies are most explosive batsmen, and उन दोनों का strike rates भी काफी अच्छा है. तो it wouldn't be a concern for me if he doesn't score that well. But yes, he can definitely give a balance to my team. Okay, next question is from Rahul. Hi, Aniket. Do you think your team lacks out and out fast bowler? Because as you said, the Himachal Pradesh cricket ground pitch is pretty unpredictable. So you have Bhuvneshwar Kumar and Mohammad Amir, who can, both of them swings the ball, and Mohammad Amir, as age is not on his side, his pace has reduced considerably. So is there a case for a out and out fast bowler who can just take the pitch out of equation and bowl good bounces to get out a batsman from other team? Very good question to ask. So the bowlers which I have, they Mohammad Amir, then I have Tim Saudi, then I have Sam Curran also, as I mentioned about him. And these three bowlers, they can really provide me a very good pace. Even though Bhuvneshwar Kumar, Tim Saudi, and Mohammad Amir, their pace have reduced. As I said, that Himachal Pradesh offers a very good swing, and we know that Tim Saudi and Bhuvneshwar Kumar, they are very good swing bowlers. So they would be very crucial to get wickets against Indian team in those situations. Fast bowling doesn't depend on the speed of the ball. It depends on how you bowl. Whether it is the pitch supports swing bowling. So I think Bhuvneshwar Kumar and Tim Saudi, they have a really good experience over there playing. And Tim Saudi also has played around 40 to 50 T20I matches against India. If you go and check the stats also. So he would be a really good option for me to play over there. Also, Mohammad Amir, he can bowl very well. I have chosen him just because Indian team have two good batsmen, Virat Kohli and Hardik Pandya. So I have checked the stats that Mohammad Amir can actually beat Virat Kohli most of the times. So that's one of the reason I have chosen Mohammad Amir in my team, even if the speed of his ball is reduced. Okay, time is up for Q&A session. So our last participant for today is from MCA 2B, Keshav. Keshav, his credits are 90. His opponent is CSK, and venue is Chennai. I'm audible? Yes. Yes. As my venue is Chepauk, Chepauk Stadium, Chennai, and I am playing against CSK. My team is openers are Rohit Sharma and KL Rahul. Third, Surya Kumar Yadav. Fourth, David Malan. Fifth, Glenn Maxwell. Sixth, Rahul Tewatia.
7th Akshar Patel, 8th Sam Curran, 9th Chris Jordan, and 10th Rashid Khan, 11th Trent Bolt. As I said, like Chepauk Stadium is hard pitch and doesn't have any grass, so it's quite good for batting as well, and it's quite supportive for bowlers as well, as it doesn't have any um, mm, what I said, dew factor. So it's quite good for spinners as well. So that's why I have 4 options as a spinner, and for a backup as a one more option as a 6th or 7th option I have if anyone get more runs. And I've picked Rohit Sharma as my captain and KL as a wicket keeper. I went for Rohit Sharma because uh, I have one more option like Virat Kohli, but Virat Kohli is is unbeatable. He's very good at number 1 or number 2, number 3. But I have specifically chosen Rohit Sharma because as a captain, he played against CSK, and most of the time he won the match against CSK. So he's a second highest scorer among against CSK. That's why I took Rohit Sharma. And third, Surya Kumar, because he's very good at number 3 and he's proven for MI as well as and for Team India too. If we are going with a strategy like we have to score more as much as as much as run as possible in first 6 overs, in which we can be possible that we may lose 1 or 2 wickets. If if we lose 1 or 2 wickets, then David Malan is our backup plan, who can balance the match. And if he succeed, then Glenn Maxwell is will come at number 5 as explosive batsman. He can bat at very explosively, and he can score runs so that we can reach at least average score like 170. So in Chepauk Stadium is like if we score more than 170 runs, it's quite defendable score. The average score is like 175 and 180 around. If we score more than 170 runs, then we are good to go with defending total. So next is Rahul Tewatia. He is also explosive batsman. In case of Glenn Maxwell fails, most of the times he fails, but still we have we want an exclusive batsman at the end who can drastically change the match as an X factor. And that's why if anyone can fail, another backup is ready for that. That's why I picked Rahul Tewatia. Akshar Patel is a left arm bowler and makes trouble to batsmen who like as you see, Chennai Super Kings has most of the right hand batsmen, and his left arm bowler can trouble them very well. And Sam Curran is a young player who proven herself for a Chennai Super Kings last year when Chennai Super King was not performing well in her entire IPL career. He's the only one who show that form, and he played a lot of good games for CSK. That's why I choose Sam Curran. And Chris Jordan is quite a good bowler, is a fast bowler. He's played for England basically in T20 format. That's why I took him for my middle order overs. And last two bowlers are Rashid Khan and Trent Bolt. Rashid Khan is the one of the most good spinner, is a off break spinner, so he can out uh, help me out a good wickets in the middle over. In case one partnership gets standard of 150 runs or 60 runs, I can use this machine to break the partnership. And Trent Bolt, as you see, MS Dhoni uses Chahar to bowl at the first 6 overs.
who took most of the time he took at least 1 or 2 wickets. So the same way I use Trent Bolt as a swing bowler for me, and he will try to you know he will try to get 1 or 2 wickets at least, and is a very good bowler at this page. Keshav, your time is up for presenting your team. Thank you. Okay, so Dheeraj, you can ask the first question. ओके सो जैसा आपने बोला कि डेविड मलान आपका 4th नंबर खेलेगा, राइट? Yes. David Malan, 4th pick. डेविड मलान जो भी लाइक नंबर 1 पे आता है फर्स्ट T20 में, एंड बट उसमें जो भी लाइक वो फर्स्ट नंबर पे है जो इंटरनेशनल क्रिकेट पे, वो एज अ ओपनर के फॉर्म में ही है, लाइक नंबर 4, एंड उसने आईपीएल भी उतना नहीं खेला, तो नंबर 4 उसके लिए बहुत वो नहीं रहेगा क्योंकि उसने As I said, I'm planning with a backup. Okay, as I want a player who can bat, who can manage the team if 1 or 2 down, so that he plays a good role in that case. If we have a good partnership till 15 over, then I can promote Glenn Maxwell above the David Malan. Okay, Aniket, you're next. Hello, Keshav. Yes. You said that Chennai is a dry pitch. Chennai has a hard pitch, and you know that CSK it has a very strong batting lineup, and most of the batsmen are Indian batsmen over there. So don't you think that you should have a Indian bowler in your lineup against the strong CSK Indian batting lineup? An experienced Indian bowler, because the fast bowlers which you only have Trent Bolt and Chris Jordan. The remaining are spinners, the rest 4 of them. If one of your fast bowlers fails, then how could you attack the Chennai Super King batsmen? Sam Curran and Rashid Khan, Chris Jordan and Trent Bolt. Sam Curran, Chris Jordan. As a fast bowler. So I will go with Trent Bolt as he is a tremendous. And I know you said you have to why you didn't choose an Indian bowler. If I go for an Indian bowler, then Deepak Chahar is a good, but at the end it gives a run death over. So I prefer Trent Bolt. He can bowl in the first 6 overs as well, and at the end in the depth he can bowl as well a good spell. So I chosen Trent Bolt over them, as I had limited amount with me, so I can't go for Jofra Archer or someone like Bumrah. So I took Trent Bolt as my best choice. Okay, Rohit, you can ask next question. हेलो, am I audible? Yes. हाँ, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि राहुल तेवातिया के बाद फिनिशिंग पोजीशन वीक लग रहा है कि अक्षर पटेल और सैम करन ऑलराउंडर्स है, लेकिन उन्होंने फिनिशिंग एबिलिटीज दिखाई नहीं अभी तक. उन्होंने बैटिंग करी है, सैम करन ने अप द ऑर्डर, अक्षर पटेल ने भी बैटिंग करी है, लेकिन जब मैच जिताने की बारी थी तब उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं करा. प्रेशर सिचुएशंस में आउट हो जाते हैं और लगातार 3 लेफ्ट हैंडर्स है, तो ऑपोजिशन का ऑफ स्पिनर अगर होगा तो अच्छे से वो अटैक कर सकते हैं एक साथ 3 लेफ्ट हैंडर्स को. सो मेरा क्वेश्चन है जो तीन लेफ्ट हैंडर्स इसलिए है ताकि राइट हैंड और लेफ्ट हैंड का कॉम्बिनेशन बना रहे. राइट, अगर मैं डेविड मलान को अगर ऊपर भेजता हूँ, दैट मीन्स कि टीम थोड़ी लड़खड़ा गई है, लाइक 1 or 2 विकेट्स गए हैं मेरे. राइट, तो इन दैट केस ग्लेन मैक्सवेल जो है और राहुल तेवतिया है, वो एक उनका रोल चेंज हो जाता है. सो हमें फिनिशिंग रोल तो देना है, बट राहुल तेवतिया को मैं नीचे भेज सकता हूँ एज अ फिनिशर, और अक्षर पटेल या तो क्रिस जॉर्डन को मैं आगे भेज सकता हूँ एज फॉर एक्स फैक्टर, लाइक क्योंकि वो एक क्रिस जॉर्डन एक ऐसा प्लेयर है जो कि घुमाता है और अच्छे खासे 6 मारने का एबिलिटी रखता है. तो अगर वो फेल होता है वो स्ट्रैटेजी मेरा, तो मैं फिर
राहुल तेवतिया को फिर ये करूंगा एज अ यू नो एट द एंड टू रीच द एवरेज स्कोर। तो वो मैं बैलेंस कर सकता हूँ एट द एंड फॉर अ फिनिशर रोल। आई कैन स्विच राहुल तेवतिया एट फ्रंट और at the end to make the balance, as well as I have Sam Curran who also has the ability to hit a big sixes. Okay, Priyanshu, you can ask next question. Hello Keshav, am I audible? Yes, yes. सो बेसिकली आपके टीम में अगर आप देखें तो आपके पास वो जेन्युइन पेस अटैक नहीं है। जैसे बॉलर्स लाइक ट्रेंट बोल्ट इज नॉट लाइक अ डेथ बॉलर, जो कि मतलब यू डोंट हैव द बॉलर्स जिसको जो कभी भी आए और विकेट निकाल के दे, हु कैन बॉल एट द डेथ यॉर्कर्स, क्योंकि ट्रेंट बोल्ट इज नॉट अ बॉलर विच यू कैन रिलाई। और आपने बोला कि यू आर गोना यूज हिम लाइक योर पावर प्ले बॉलर। तो अगर समझ लो बॉल स्विंग हो रहा है एंड यू गिव हिम 3 overs इन द पावर प्ले, ही टुक, चलो मान लिया उन्होंने 1-2 विकेट ले लिया, बट व्हाट अबाउट द एंड? तब तो उनके सिर्फ 1 ओवर रहेंगे। तो आप ठीक है, बोलिए बोलिए। हाँ, यू कैन कंप्लीट एंड देन आई विल स्टार्ट। हाँ, ओके ओके। सो तो वही आप एंड में क्या करोगे? और वही ठीक है, बोलिए बोलिए। ओके, ट्रेंट बोल्ट अगर फॉर्म में है, लाइक ही गॉट गुड स्विंग और अच्छा मतलब विकेट मिला है मुझे, तो मैं एटलीस्ट 2 या 3 विकेट तो ले ही सकता हूँ। अगर मैं पहले अगर 2-3 विकेट ले लिया उनका, चेन्नई सुपर किंग्स का, तो दे विल बी ऑन दी बैक फुट। So they will try to make as a Dhoni comes, and you know how Dhoni plays. He he goes after 16 or after 16 or 17 overs only he go for a big hits like for 2 overs. So I will preserve 2 overs, like one for Rashid Khan and one of Trent Bolt to bowl at the end, and rest of the bowlers will bowl at the in between, so that I will make the balance. Okay, time is up for Q&A session. आज के सारे पार्टिसिपेंट्स का हो गया है टीम प्रेजेंट करके। अभी एक सेकेंड, I'll request the judges to join the breakout room. We'll discuss that. Till then, Rajat, you can continue. अभी रिजल्ट आने में थोड़ा टाइम लगेगा, सो गाइस मतलब आप लोग कैमरा ऑन करके अपना माइक ऑन करके इंग्लैंड सीरीज जो चल रही है उसके बारे में डिस्कस कर सकते हो। गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी टीम्स थे मतलब काफी अच्छे टीम थे, अच्छा लगा मतलब ये कंपटीशन देख के। हाँ करेक्ट, सही था एकदम। बहुत अच्छा इवेंट, मतलब काफी अच्छा वो था इवेंट, एक देखने एक का तो बेसिकली एक काफी बढ़िया इवेंट लगा। ऐसे स्पोर्ट्स क्योंकि होते ही नहीं है मतलब हाँ, ऐसे आइडिया साइड बहुत के। अच्छा था, जिसने भी तो ये आइडिया मैंने अपने ऐसा स्पोर्ट्स काउंसिल एक प्लेयर वही था वही। जिसको सबको सस्ते में मिल गया था, सैम करन, और सबकी टीम में था वो। भाई नहीं सस्ते नहीं, में लेकिन फिर भी सस्ते में सैम करन सस्ते में मलन भले मिला था, लेकिन वो सस्ते वैसा प्लेयर नहीं है रे उसको रखने लायक देखने गए तो अभी के कंडीशन। अरे बट कैसा है, सबके पास उतना क्रेडिट्स नहीं है ना कि हार्दिक पांड्या को उठा ले। हाँ वो तो है। बट सस्ते में बेटर प्लेयर मिल सकते हैं ऐसा। मैंने एटलीस्ट सबके में देखा, एटलीस्ट सबके में ही था सैम करन। फेवरेट पिकअप था मोस्ट ऑफ वही वही। मेरे को सबसे उसको पहले और राहुल तेवतिया को सब लोग मतलब ले अरे रहे भाई थे। राहुल देते हैं फर्स्ट एक सीजन से ही खा ली सब लोग। एक सीजन में मारा है, सब मारेगा। राहुल हेलो। हाँ भाई ये जो इवेंट था मतलब बहुत सही था, क्या सब लोग वही बोल रहे थे। थैंक यू। तो अभी रिजल्ट आएगा थोड़े टाइम में, तो तब तक के लिए मैं सबसे पूछना चाहता हूँ कि व्हाट आर योर व्यूज ऑन द करंट इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज जो अभी चालू है, टेस्ट हो, T20 हो, ODI जो चालू है, बात कर सकते हैं अपन उसके ऊपर। इंडिया की बॉलिंग बहुत वीक लग रही है बराबर बोल रहे हो। तो ओडीआई नहीं, इंडिया प्रिजर्व बहुत कर रहा है। मतलब इंडिया क्या सोच रहा है कि वो अपने मेन जो बॉलर्स है वो बहुत ज्यादा प्रिजर्व कर रहा है। शामी हो गए, बुमराह हो गए, शमी बट तो उनको injured ट्राई था। करना चाहिए क्योंकि वर्ल्ड कप भी आ रहा है, तो
उनको प्रैक्टिस करने का वो नहीं मिलेगा। इंटरनेशनल इंटरनेशनल होता है। पता है शमी तो इंजर्ड है और बुमराह तो अभी शादी हुआ है उसका। स्काई कुलदीप को नहीं लेना चाहिए आई गेस नेक्स्ट मैच, नहीं तो फिर से बहुत इशू होगा क्योंकि उसके विकेट्स भी नहीं आते। चहल को लेना चाहिए, चहल को लेना कुलदीप चाहिए। एंड चहल एग्जैक्टली। का कुलदीप एंड चहल का सक्सेस तब तक था ना जब तक धोनी स्टंप्स के पीछे था, मालूम है? हाँ उसके बाद एग्जैक्टली। गाइड करने को नहीं है कोई पीछे, वो सीन हो रहा है। उसने बाबर आजम को जो बॉल डाला तो अब तक का हाँ बेस्ट था वही वर्ल्ड वही कप। वही वही तो बेस्ट बट उसके बेसिस पे कितना खिलाएंगे। वही बात है ना। एक्चुअली देखा था धोनी पीछे से प्रॉपर गाइड करता था उन लोग कहाँ क्या डालने हैं, अभी गाइड नहीं हो पाता पीछे से स्टंप्स के, इसके लिए हाँ लोग क्यों बहुत बेंचेस मार ऋषभ खा को पंत सेम भी ही यंग है बॉल ना डाल बहुत, रहा था, आगे कितना आगे दे बोलेगा। रहा था रहे। सारे वही बॉल। वही देखा अरे ऋषभ मेन पंत कैसा ना, कितना उसको मार पेस खाया। नहीं है ना, ऐसा लूप बॉल डाल रहा है तो वो लोग पिक करके मार दे रहे थे। उसका बॉल प्रेडिक्टेबल हो जाता है, मतलब एक दो प्रिडिक्टेबल बॉल हो अगर जाता है, डिफेंड अगर किया ना। बहुत स्पिन नहीं हुआ तो उसका बॉल समझ ले मतलब बहुत हाँ एग्जैक्टली। प्रिडिक्टेबल है। चहल कैसा है, वो क्विकर डालता है, ऑफ स्टंप में डालता है, लाइन वेरिएशन, स्टंपिंग का केकेआर में भी चांस वही कम हुआ हो ना जाता है। उसके साथ, रन ज्यादा पूरा दे रहा है कॉन्फिडेंस खा गया ठाकुर की उसका। जगह। वही 2 साल अगर ब्रेक ने मिल गया ना बेचारे को, विराट और खेल धोनी सकता। के अंडर था तब ठीक था, अभी तो उतना अच्छे से विराट कोहली गाइड भी नहीं है। सीन है। और अभी कैसा है तो लूज, केकेआर ने रिटेन किया वही बहुत बड़ी बात है, मतलब वही वही बहुत मुझे तो महंगा लगा था वो छोड़ लास्ट देंगे वो टाइम। लोग। और कैसा था चहल और दिनेश कार्तिक ने तो बाहर ही रखा था उसको पूरा सीजन, मतलब बहुत महंगा प्लेयर था वो ऐसे देखा गया तो फिर भी हाँ उसको बाहर वही रखा वही था बहुत टाइम। रिटेन नहीं किया। हाँ इस बार भी उसको 4-5 करोड़ में रिटेन किया, तो क्या सेंस लगा कि किया पता नहीं, बट स्टिल। अभी मेरे को नहीं लगता उसको खिलाएंगे भी, ये जो भी हाँ मैचेस मतलब हुए कुछ वेस्ट है ना वो, उनके। मतलब। वही वही टेक्निकली वेस्ट है वो। और अभी कैसा था जब तक चहल एंड कुलदीप साथ में खेल रहे थे ना तो प्रॉपर था, बट अभी इंडिया के साथ थोड़ा लोअर ऑर्डर में थोड़ा बैटिंग अच्छा चाहिए, तो इसके लिए अरे जडेजा ला पुणे रहे में हो है लोग। ही नहीं, स्पिन है ही नहीं पुणे में, तो मतलब नहीं है, बैटिंग फ्लैट पिच नहीं एकदम। नहीं दो नहीं, स्पिनर मतलब भाई, एक तो चहल खिला सकते थे, नहीं तो भी क्या। वही मतलब प्रॉपर इंडियन टीम कैसा ओडीआई देखेगा ना, तो कैसा है उनको बॉटम में थोड़ा बैटिंग चाहिए रहता है, तो जडेजा खिला लेता है वो लोग, इसके लिए एक स्पिनर कम हो जाता है। चहल या तो कुलदीप किसी एक को ही खिलाएगा। अभी तो चहल ही फेवरेबल लग रहा है, कुलदीप का बहुत डाउटफुल है। कुलदीप का तो बहुत कम 2 मैच हो गए ना, विकेट्स भी नहीं मिले उसको। है। एक बार बाहर गया ना अगर स्क्वाड से, बहुत टाइम लग जाएगा अंदर आने को, कितने सारे उसको तो नए सबसे प्लेयर ज्यादा आ रहे हैं। पता है, वो 2 साल था ना भाई टीम के बहुत बाद। मतलब बहुत ज्यादा ऑप्शन है ना, एक ही स्पॉट के बहुत लिए ज्यादा दो ऑप्शन तीन है। प्लेयर्स हैं मतलब। वही ना, इस बार हाँ जो एग्जैक्टली। स्क्वाड के बाहर हुआ वो तो समझ ले अभी आने में बहुत उसको एक आने में सीरीज तो भी लग बहुत सकता है पूरा। सही सही। श्रेयस अय्यर का वही होने वाला है अभी, नहीं श्रेयस अय्यर उसका नहीं बहुत जाएगा बाहर, मुश्किल। श्रेयस अय्यर प्रॉपर चल। स्काई है नहीं ना नहीं नहीं, उसका अगर रिप्लेसमेंट, वही परफॉर्म कर सीन है। दिया ना स्काई या फिर ऋषभ पंत ने, तो उसका हाँ आना मुश्किल हो जाएगा, जैसे इन लोग के साथ हुआ था ना वैसा। हाँ, वो भी है। Okay, so I guess the discussion is, sorry for interrupting. I will just announce the winners. Just 2 minutes. अभी विनर भी डिसाइड होना है। Okay. So first is Adarsh Sawan from MCA 2B. I request Adarsh to switch on the camera. I congratulate Adarsh. Thank you. Yeah, So first congratulations is Adarsh. Adarsh Sawan. Second is Manish Patil from D13. Manish Patil from D13. I request Manish Patil to please switch on your camera. Yes, congratulations, Manish. Thank you. And for the third position, we have a tie. So it's a tie between Rahul Kulkarni from D9 and Avinash Tripathi from D14. Guys, please switch on your camera. So for third, we have Avinash and Rahul. So congratulations, guys. Thank you. Thank you guys. Thank you. Congratulations, everyone. Thank you so much, participants, for coming in today's session. I thank all the judges, Omkar, Anand, Chetan, and Jinang, for being here. And by this, I conclude the session. Thank you so much. Thank you. Great. It was great fun, guys. Well done. Congratulations guys, first second third। Well done, guys. मजा आया, कॉलेज में मिलते हैं फिर अपन।